And a very good morning. And a very good morning, everyone. Day one here of the Super Kings Premier League Season 6. We are all set, all ready. Both the teams in front of your screens, VB11, STN Capital Advisors, all ready to face off in match number one. VB11 have won the toss and elected to field first. And it's a bright sunny morning here at the Shinde High School cricket ground. It's always an advantage when the team that's won the toss elects to bowl first, because they get to understand what conditions are and how the ground will play. This is Super Kings Premier League Season 6. Hello, mic check. So, as we said, it is VB11 who won the toss and elected to field first. VB11 in their orange jerseys, and on the other side, SDN Capital Advisors in the blue. And as the umpire signals start of play, here we go. First ball of Super Kings Premier League 2026. And that's swung towards the leg side, and what a way to start. What a way to start season number 6, Super Kings Premier League. SDN Capital Advisors open their account with a beautiful shot. Akash and Saurabh, the opening batters. It is Akash who swung his bat and sweetly timed that delivery for 6 runs. Oh, he moves across once again and perfectly over the gap there on fine leg. Nothing but one thing to do for the fielder is get the ball from the boundary. So after choosing to bowl
not the best start for VB11. And after 2 deliveries that he would not be happy with, Anand Daima here finally correcting his line and resulting in a single 11 after 3 deliveries only. Now it's Saurabh Soni who takes strike. Well, that's a good delivery. Never easy to adjust from a lefty to righty, right in the first over especially. So good recovery after the first 2 deliveries, you could say. And still, we hope that the next 2 deliveries, the remaining 2 deliveries also result in either a single or a dot. Oh, and that is swung towards the leg side once again, and 6 more runs. 19 runs off the first over for the SDN Capital Advisors. So after being asked to bat SDN 19. Aló, aló. और ये across the wicket. हाँ बोल. स्ट्राइक पे आकाश हेलो. और आकाश ने Aló, aló. और वहां पे चीकी बनने की कोशिश. 25 रन एसडीएन कैपिटल एडवाइजर्स. मंगेश शिंदे पहले बॉल पर एक चौका खाते हुए.
my God, shot straight down the ground. 6 more runs and the boundaries are not stopping. Just 1 4 and 5 6s. Hello. Hello. And it's only the second over. Across the wicket he goes. In the air and the ball is straight out of the ground. 6 more runs. And the VB11 will be saying what is happening. Oh, and he advances. But this time doesn't get the elevation. Straight to the fielder and wow, look at that. A single. Amidst all that boundaries, one single. 25 runs in this over. 44 for no loss after 2 overs. And it looks like everyone has been watching this season's IPL and is taking inspiration. Akash batting on 36. 36 runs. What a blistering start. Oh, and you see the result of that onslaught. Then maybe the introduction of the spinner coming 2 overs or maybe an over or 2 overs too early. But that's exactly what happens when you play such a knock, such an innings. 45 runs of just 2 overs, forcing the bowling team to change their plans. Oh, and that's swatted there towards the leg side. Towards the backward square leg. Just a single. Oh, little yes and no there. Nothing untoward at the end. Good delivery. Good delivery. Just 2 runs of the first 3 deliveries. Oh, and that's a wicket. Oh, he moves 2 across this time. Tried to do what was working so far in the last 11 deliveries. But right at the end, they're moving across and his leg stump is exposed and leg stump is uprooted. The first wicket for VB11 comes and Akash has to walk back. But you could say that he's given his team exactly the kind of start they needed. So 2.4, 46 for 1 the score. So the captain, they're making that tactical move of
getting the spinner, and the spinner delivering with a wicket. Oh, and a perfect matchup for the bowler. Oh, and a good delivery. Straight into the block hole. It's defended, and that will bring us to the end of the third over. A successful over for the bowling team this time. So after a little bit of chaos for the bowling team in the first 2 overs, they settled their nerves with that quiet one. .48 for 1 after 3 overs. And the new batter who's taken his strides towards the crease, Abhijit. So now on to Saurabh and Abhijit to make use of the platform that's been laid. 48. Oh, that's in the air, and that is no man's land, unfortunately, for the bowling team. Very difficult, these kind of catches. But you can see that it's changed a little bit, the momentum of this game. That's exactly what the bowling team would want. Oh, that's straight into the block hole there. Good shot. But even though that good shot will only get them 1 run. So VB11 doing the right thing, drying up the boundaries. Oh, and that's another full toss in the air. Another chance that could have been. And maybe a little bit of frustration creeping in for the batter. You can see that he's just taken a few more seconds to recollect himself. Oh, beautiful, beautiful delivery from Girish there. So at the end of 4 overs, it's 54. 54 for 1 after 4 overs. So just 6 runs coming
6 runs and 2 chances created. Tells you how important it was to hit those early boundaries. And maybe the bowling team has identified something, because after the first 2 overs of pace, we've seen that spin has been favoured, and looks like that's going to continue even for the next over. It's Jatin now. And this time it's a 6, so they waited 2 overs, and maybe now they'll unleash 60 after just 4.1. Not the best delivery to start. Straight in the swinging arc for the batter. Oh, that's a little short. That's a little wide. The player from long off rather. Girish there with a good effort. Oh, and that's a good stop. Good stop in the deep there. And also, it's always difficult with the tennis ball bounce. So good recovery there from the bowler after conceding that 6 in the first delivery. It's only been singles and doubles. Oh, and he finishes it off with a dot ball. Still, unfortunately, costing them 12 runs. So you see how important it is to just score a boundary, hit a 6 in the first delivery, or the first 2 deliveries rather, of the over. And it just puts the and finally, after 3 overs, after 3 overs of spin, we're seeing pace being introduced. Oh, back into the attack and pace. That's a beautiful shot there. Using his wrists, not using his power this time, using his placement to get 4 more runs and take the total to 70 of just 31 deliveries.
Oh, and this time as well, there was not too much power there. It was full timing. And with that timing was a full swing. So now you see exactly why they were using spin, not wanting to give them any pace, wanting to make them take all the effort in manufacturing the shot, manufacturing the power for the shot, but this time, no half measures. That's in the air. Oh, one bounce to the fielder for a single. A beautiful delivery. Great reply from the bowler. And maybe that's what he was looking for, what he was searching for, that exact length. Oh, that's straight to the fielder. Straight to the fielder, and would you believe it? This one was wide. It was there to be hit, and the batter did hit it. Abhijit, Abhijit Gowli there, but straight to the fielder, straight in his hands. Didn't have to move an inch, didn't have to move a muscle, and they lose their second wicket. SDN Advisor 77 for 2 after 5.5. Finally, Mangesh gets a reward. $78 for 2 after 6 overs. And good running between the wickets. Oh, what a throw. Good throw from the deep. Forcing the batter to maybe hesitate there. Oh, and change in the length. Change in the length. He, he saw the batter was advancing. So drag down his length, and we have a visitor on the field.
Oh, that swung and that will. Yes, it will only be 2 runs. I thought that it was in the gap there, not in the gap. So an over that started really well, that promised to deliver maybe a wicket or two for the bowling team, ends up giving them conceding 11 runs. And I see our umpire there signalling batting power play. So after 7 overs, it's 89 for 2. And it's Anand Daima now back into the attack. That swung down the ground. And mid-off was inside the circle. Vishal tries his best not to be too much power on that shot. It was only going one place. Out of the boundary, 4 runs. 93 their total. Oh, and is that an edge or was that a deliberate shot?
Straight into the gap and back-to-back boundaries. 97 the score. Just 3 runs away from that magical 3-figure. And maybe a double bluff from the bowler, because if you take a look at the field, there's no one deep on the offside, at least at the cover region. And you see that is the case because it is the batting power play. So only 3 fielders will be allowed outside the 30-yard circle. So it's a very difficult task bowling this over, and oh, straight to the fielder there. Beautiful delivery. And with that single, they get their 100 to the SDN Capital Advisors. 100 for 2 at the end of 7.4 overs. Oh, and that's a helicopter there. Swung. Vishal throws. Oh. A direct hit was needed, not to be. So they will scamper quickly across for a single. 101 with 1 ball to go in this over. Oh, and really well done there. You can see what he was trying to do. Keep it out of the arc of the batter. Manages to do so because he couldn't get underneath that ball, as we say. So just a single. But even so, that results in 13 runs at the end of the batting power play over. So the score is 102 for 2 after 8. And what is that signal going to be? It's going to be 4 runs. Yes, that's a misfield, unfortunately, for VB11. Not helping themselves, not helping their case. Especially in the last few overs. In the last 2 overs, you would want to apply pressure. And that is done by stopping boundaries.
not letting them take those quick singles, and that's a full toss. It swung. The keeper runs behind it, and that tennis ball bounce. Fools almost every player there. Oh, goes across. That fine leg is inside the circle, so wanting to go with a fielder there. All you could manage was maybe an edge. Not sure if it was a leg by or not. And that is the pressure of stopping the scoring. Results in a wide and extra delivery. And that is down the ground. Not too far though. The fielder running. Jatin. Oh, little too much distance for him to cover. He did well to almost reach the ball. And I'm sure that the bowler would be expecting him to take it. Bowlers can be very greedy creatures. They want everything to go their way. That's really long in the air. Oh, that would have been a beautiful catch if taken. Just so high in the air. Not able to get the timing right. And that's, you could say, an outside edge. Straight to the fielder at the end of 9 overs. It's 115 for 2. Saurabh striking at 183, and his partner in crime, Gaurav Shah, striking at 160. Last over. And with that, I would also request the captains of the next match. Oh, that's a wide delivery. Really close. Oh, look at that. The bowler. Oh, the bowler's really unhappy. Oh, and that's a no ball.
Just what the doctor ordered for the batting team. Last over. You anyways have the license to go big. But this is just wrapping it in a gold gift wrapper and giving it to them. Oh, and that's a 50 as well. Oh, it's a beautiful 50 for Saurabh Soni. 50 of just 26 deliveries. He's striking at over 190, and look at that, he's still so desperate for taking strikes still. A wonderful knock for his team, guiding them to what promises to be a formidable total here. And still, 4 more deliveries left in this innings. He swings towards the leg side. Where's this ball going? Only one place it is. 4 more runs outside the ground. And as I was saying before the onslaught started, that I would request the captains of the next match, ADB Warriors and SN Yodhas, to please be ready for your toss. Oh, and the fielder from long on here for the lefty, doing well. Jatin, good throw, strong throw. Necessary to keep them down to just 2 runs. And where's this ball going? Oh, that's a drop catch. And that also results in a 4. So it's a drop catch, and it runs away to the boundary, rubbing salt to the wounds of the bowling team. And not easy at all, folks, by the looks of it. 62 of 30 deliveries. And that's the last shot down the ground. Will it go for the boundary? Yes, it will. So Saurabh finishes this innings with a beautiful shot down the ground. One that I'm sure will make even MS Dhoni proud, using his wrists there. So they finish at 138. 138 for the loss of just 2 wickets after 10 overs. ST and Capital Advisors. Formidable total. Big total. 66 runs for Saurabh, and at the other end, Gaurav giving him ample support. 16 of 10 deliveries. Partnership of 61 of 27 balls. The last over going for 23 runs, so the perfect finish. And now 139 runs in front of you in just a few moments, the run chase. पण दर महिन्याला मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँक ही. शुक्ला जी. हाँ जी बंद है. सुनो. शुक्ला जी. अरे कल अनाज बैंक बंद है. बैंक. जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ. अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो. QR कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना. तो मैं तो बन गया ना चपरासी. नॉट बैंकिंग विथ AU. AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. मतलब फटाक से AU. हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी, तेव्हापासून बँकेचं तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बैंकिंग विथ AU. AU.
एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. यू हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. Who is going to call for the toss? So Kavit Poddar is going to call. Heads is the call from ADP Warriors. And heads it is. So ADP Warriors, you have won the toss. What have you selected? Bowl first. Any particular plans in the match number 2 for bowling first? Actually, I have called Nipun. So I didn't thought much. But Nipun told ki we'll bowl first. Okay, great. So all the best for your match. What would have you done, DB? I was looking to bat first only. Would want to put a score on the board and let them chase it then. Great. So both the teams got what they wanted. Let's see a great exciting match number 2. That's it from the center. Thank you. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी, जी बंद है. सुनो. शुक्ला जी. अरे कल अनाज बैंक बंद है. बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ. अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो. QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना. तो मैं तो बन गया ना चपरासी. नॉट बँकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. मतलब फटाक से एयू. हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. VB11 were the team that won the toss and elected to field first. But that first innings not going their way, you would assume. 139 runs is what they have in front of them. It's a bright, sunny, shiny morning here at the Shinde School ground. And folks, this is the Superkings Premier League Season 6. So we welcome you all joining us on YouTube. And as we welcome you on YouTube, a big welcome and a big thank you to our YouTube sponsor, AU Small Finance Bank. Whatever action you're getting to see in front of your screens, it's all because of their efforts, and a big shout out to AU Small Finance Bank. Thank you so much for your support. And I often wonder what exactly do batters plan and think when they have such what a beautiful delivery. What a beautiful start to the over by Praveen here. Made me stop speaking about my point and start speaking about his delivery. Oh, that's a full toss. We'll have to see what the umpire's call is. It's over. The fielder there, does he manage to stop it? Yes, it looks like he has. Will they take 3?
Oh, yes, they do. That's good running between the wickets and no ball being signaled. Yes, that will be a free hit. Oh, and the commentator's curse coming in full flow. Just as I was praising Praveen there, he bowls a big one, a big no ball. Oh, that's so... What a shot! What a shot that is. Look at the speed of the wrists there. Wow. I am sure... I'm sure Vishal is going to go back and watch the replay of this shot. Beautifully played there. He almost made it look so effortless. And the fielder had no reaction because there was such less time. Oh, that's an edge. Straight to the fielder at short third man. Oh, a lot of action already in the first over. Oh, that's over. Yes, that's over the infield once again. Extra cover, wide long off region over the fielder's hands. 4 more runs, and at the end of the first over, it is 14. Exactly what they need. Current run rate is 14. The required run rate is just a little under 14 here, 13.89. So it's Mangesh and Vishal who've walked to open the batting for VB11, and they've scored more than 11 already. Wow. Where will this go? That's a beautiful shot. Nothing was going to stop that ball from going to the boundary. Not even the pace from the fielder there. Oh, good delivery, good delivery. Saw what he was trying to do. Move across to the offside and once again send the ball over fine leg, square leg. Has to settle for a single.
Oh, that swung. And oh! Oh, no, no, no. That could have been a catch. That could have been the first wicket. But that will be the first drop chance instead. And I thought when he hit that shot that it was going straight over the boundary rope for a 6. But that tells you that this boundary towards the leg side is also quite big. Oh, that's a full toss. Not sweetly timed. Another chance. Oh, another opportunity. 2 in 2. When both of those chances dropped, same fielder, same kind of shot. And the result also the same. And could this prove to be game changing? Catches win you matches, and if you drop them, maybe you drop that game as well. Oh, and the bowler, I'm sure, will be fuming. Fast bowlers never like it when a catch is dropped off their bowling. And it's a big run chase, so they need boundaries there. They cannot be happy with singles. And he comes from around the wicket and over the cover fielders. They would have wanted the ball to go the batting team, but it stays in. It's just one. Oh, and that's exactly what he is trying to do. Come from around the wicket and use that angle across. Make it difficult for him to swing. And it's not that easy. Oh, but this is a good shot. Straight on the speaker it goes. And that's 6 runs. A beautiful shot. The safest place, they say, on the cricket field is straight down the ground into the V. And that score moves to 30 runs now. 30 runs of just 2.3 overs. And this time he swats it towards the leg side. The fielder from mid-wicket almost outrunning the ball. This time straight to Akash. Just a single. So it's 34 at the end of 3 overs for the VB11 and 12 runs coming off this over.
8 runs of the previous one. So in the last 2 overs, just 20 runs. A little below the net required run rate rather. So some work to do, some boundaries definitely needed for the bowling team, and it's Akash there warming up to bowl the next over. Equation. So 105 and 42 deliveries. And the first blow for VB11 in this innings. And Akash not wasting any time to make an impact for his team. And I'm sure he'll feel really good about himself after those 2 dropped catches. 2 dropped catches definitely will play on the bowler's mind when he's marking his run up. But Akash making sure that he doesn't let any of those thoughts conquer him. And gets a wicket for his team. A breakthrough, 34 for 1. New batter taking strike, Anand Daima. And where's this going? Straight to the boundary. Beautiful shot there. Yes, it was full. Yes, it was a full toss. But you still need to put these bad balls away. A wonderful shot. Making use of his wrists once again. Making use of his timing. Choosing not to muscle it, but to maneuver it. 4 more runs. So that's the second boundary in that same region. So the bowler repeating his mistake perhaps. But this time it's Vishal and not Anand who finds the boundary. And that's a good sign for a chasing team when both the batters are getting the boundary ropes, not just from one side. What that ensures is that there's no pressure on one batter. Not one player feels the heat, both of them sharing responsibilities. But Akash coming back. And this is coming straight to me. And yes, straight down the ground. 6 more runs
An expensive over for the STN Capital Advisors. VB11 on the other hand will be really happy. Exactly the kind of over they needed if they were to put some pressure back. Especially after losing a wicket, it's so important that you don't let the bowling team get a little bit more confidence. You don't let them dry the runs up. And T20. I was about to say T20 because that is what IPL fever does to you. But it's just amazing to see how cricket in itself has changed over the last few years. And now you just see the kind of shots that people have started to play on a regular basis. We used to watch the shots being played sporadically, not that often before, but in the last 5 to 6 years, the game has evolved, elevated itself to another level. That's why you see that there is this belief in every team, every batter that no total is big enough. And look at that, another big shot there for 6 runs. And they're definitely getting closer to this total, are the VB11. That's a bad delivery in the context of the game. Oh, that's a swing, wild swing, and the umpire says not a wide because the batter is shifted as the bowler released. Oh, that's a beauty. That's one for the books there. That is Anand looking in some form. Has not wasted a single ball, not a single delivery. Maybe that coming from the over that he bowled. Great confidence. Tried to find the gap there, but straight to the fielder.
So the score for VB11 is 66 after 5.2. Equation reads 73 needed of 28 deliveries, folks. Oh, that's a big miss. Anand will definitely be unhappy with himself there. That ball had a 6 or a 4 written all over it. Instead, it's a dot ball. It looks like they're asking for water. That's a shot. But you can see the fielder there from extra cover. It's quite fine there. Good stop. Only keeps it to 1 run. Oh, but this time, where will the ball go? Oh, straight into the fielder's hands. And with every ball now that doesn't see the boundary rope, the pressure will rise. Excellent delivery. Saw the batter. Wanted to charge down and followed him closer to the body, not allowing him to open that swing. So at the end of 6 overs, VB11 are 70 for just 1 wicket. 69 runs off 24 balls. And you can say that it is still in the batting team's favour. Because just as I was saying before, that in today's day and age, with how batting has changed and with the kind of shots that people play, no total is safe. That's the tagline that Star Sports has been using for the IPL. No total is safe. And I think that it is definitely applicable here as well. And as I can hear the shouts from the dugout of the VB11, it's all about 1 over. Yes, it definitely is. 1 over, game-changing over. An over that maybe brings them 18 to 20 runs. Drops the shoulders of the fielding team, and that maybe brings the chance of mistakes. That is straight in, and yes, not a drop catch. And Vishal unfortunately has to walk back to the pavilion. Worst feeling. What a beautiful ball from Pratik Patil there. Bowling to his field, exactly what his captain would have wanted. Straight into the fielder's hands. He didn't have to move a muscle there. And that's when you know that this wicket was not just luck, it was a plan.
So 70 for 2. And now they're in a little bit of a bother because there's a new batter at the crease. Let's see how difficult or easy it is to hit from the first ball. Oh, and Sagar has said that it is not difficult at all. He doesn't need any sighters. No time wasted. First ball, 4 runs. 74 the score. That's a big blow. That's a huge blow for the batting team. Anand was looking good, striking the ball at 190. 19 of 10 balls. Unfortunately, on his 11th delivery, he has to walk back to the pavilion. You could see there, maybe he was asking the umpire about the height of the ball. But the umpire is absolutely sure in their decision. So 75 for 1 is now 75 for 3. So losing 2 quick wickets. And wickets in clusters in a run chase is never good. So under pressure now, VB11. With every delivery that doesn't give them a run or a boundary, the run rate, required run rate keeps on rising. It is 19.2 now for VB11. And that brings us to the end of an excellent over for the SDN Capital Advisors. Pratik Patil, 7 runs and 2 wickets, putting his team in the front position here. And now it's the batting power play. But they need 62 runs off the last 3 overs. Not easy by any means. It's 21 almost needed every over. 21 runs. Oh, and Sagar goes for a swing, and that ball will go to the boundary. Yes, 4 runs. Unfortunate for the bowler. He gets an edge. But an edge also sometimes results in great things. 4 more runs. Oh, and that's hit the wicket, yes, as I have been told.
Unfortunately, wasn't able to spot it. It was a bowl. It's a wicket for the bowling team. So a result that they will be quite happy with. Just that's a welcome boundary for the batting team. They need a lot more boundaries. A lot more to go their way. Momentum right now with the bowling team. Losing just one. As I was saying, from losing just one. They've lost 5 wickets and trying to go towards the offside. Just gets a bottom edge, or maybe right at the bottom of the bat there. Just a single will not hurt the bowling team. So 8 overs done, 84 for the score. The equation is 55 needed of 12 balls. And one would say that this game is almost in the bag of the bowling team, and I say almost because you never know what is in store. You never know what the result is until mathematically it's almost out of reach. One trying to be cheeky there, trying to access that gap. And it was the right thinking from the batter, because they need boundaries. They need to find the ropes if they have to raise their hopes of winning. But this time around, it goes into the hand of the square leg fielder. Just a single.
So not much that they can do right now. With this kind of bowling, with this kind of fielding. Look at that. Another excellent delivery. Full wide length of that delivery. So important. And you would think it's sweetly timed, but no, it's straight in the hands of the fielder. Another wicket. And the VB11 are now faltering. They've lost 4 wickets in such quick time. It was 77 or 75 almost for loss of just 1 wicket. And now take a look at that scoreboard. That is exactly what happens when there is pressure off the scoreboard. When you know you have a total to chase and a total to make. There's no option left but to hit big. 51 of 7. So now this is mathematically impossible, but they need to play for their NRR. So even though you may be out of the winning equation, you definitely have to think about the bigger picture. So that's just 5 runs. Just 5 runs off this over. And also a wicket. So excellent bowling from Swapnil. And now they need 50 runs off the last 6 deliveries. They can score 36 if there are 6 legal deliveries and 6 sixes. Every run definitely matters to both teams. On one side you have VB11 who would want to reduce their margin of loss. And on the other side, a team that would want to make that margin as high as possible. Using the same tactic that was employed against them in the first innings. A spinner to slow things down. Inviting them to take the aerial route, take the risk. And a change in the field. Point goes back. Cover was called back. Oh, and he moves across. That's so wide. That'll just be a single. So nothing much to worry about for
Oh, that swung the fielder straight into his hands. Praveen there easily doing that. So another wicket down for VB11, make it 6 now in the innings. And just the last ball remaining in this match. So it is going to be, unfortunately, the VB11 who will have to take a loss. STN Capital Advisors only losing the toss in this game because the game will go to them. And they take a single, and with that single, it is 94 after 10 overs. So 44 runs, the margin of victory for the SDN Capital Advisors. 94 for 6 at the end is what they could make. AU सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला जी बंद है. सुनो शुक्ला जी. अरे कल अनाज बैंक बंद है. बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ. अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो. QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना. तो मैं तो बन गया ना चपरासी. नॉट बैंकिंग विद AU. AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. मतलब फटाक से AU. हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ AU. AU करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. AU सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है. सुनो शुक्ला जी. अरे कल अनाज बैंक बंद है. बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ. अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो. QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना. तो मैं तो बन गया ना चपरासी. नॉट बैंकिंग विद AU. AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. मतलब फटाक से AU. हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ AU. AU करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. AU सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है. सुनो शुक्ला जी. अरे कल अनाज बैंक बंद है. बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ. अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो. QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना. तो मैं तो बन गया ना चपरासी. नॉट बैंकिंग विद AU.
एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री यूपीआय क्यूआर, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है. सुनो, शुक्ला जी, अरे कल आना, आज बैंक बंद है. बैंक expect also. So it was good, but I think Koile and Sony played very well. So any comment for the next match? No, we have players to do their work. It was just a bad game, and we'll come back stronger. Okay, great. So now we'll move on to the man of the match. The man of the match. Any guesses? It's Saurabh Soni. I will request Vishal Burat to please give away the trophy. बड़ा बात. आजा बच्चे वो अभी आ जाओ फोटो में. ए प्रवीण आ जा. Thank you so much. I will also like to give the prize for fighter of the match. The fighter of the match is Mangesh Shinde. I will request Girish Shinde to take on his behalf. I will request Dashrath Bachche sir to please give the trophy. Thank you so much. That's it from the presentation. Over to the commentators.
and that's a shot. That's a big shot. Left arm across the wicket. But the result, 6 runs, and that is 50 for SN Yodhas. 50 up of just 4.1. 4.1 deliveries. Oh, and this, oh, so close to the fielder's hands there. This perfect partnership batting between both of these batters, Darshan and Tanmay. Darshan 25 of 13, Tanmay 22 of 14. And where's this ball going? It's in the gap. Unfortunately for the bowler, it will be 4 runs. The bowler there really disappointed maybe with the fielding effort, but not the best of deliveries. Towards the leg side, giving ample space, ample time. So expensive over this. It's 13 runs already. And it's important that the bowler finishes strongly. Really slow this time, but that only means there is just so much more time for the batters to watch the ball. Deposited 6 runs more. After 5 overs, it's 63 for no loss. And not helping themselves there with the execution of the deliveries. That length there just too full. Not on the good length. If that was on the good length, maybe there was an opportunity to get a little bit of bounce from that length. But this time, when it's full, it's just straight underneath that sweet spot. All Darshan had to do there was swing, and swing he did.
So once again, we've seen that the team that's elected to bowl, that team under the pump. Oh, and this time tries to switch. Tanmay being extra cheeky there maybe. Because you would assume that when they're timing the ball, hitting the ball so well, they can just go for beautiful cricketing shots like these. Once more over the infield. And the result the same. Four more runs added to the total there. So little too short once again. Oh, and this time Darshan betters the previous delivery. Over extra cover is such a difficult shot to play, but when a player plays it, it's a wonderful shot to watch. So after 6 overs, it's 74 for no loss. Darshan on 45 of just 20 deliveries. On the other end, Tanmay, maybe his strike rate taking a little bit of a hit, but steadying the ship there, making sure Darshan doesn't have to worry about wickets falling. Down the ground for a single, and that brings up Darshan's 50. What a way to start the tournament for the team, for Darshan.
And it's always great when your top player opens the tournament in some form. It gives so much confidence to the entire dugout, to the entire team. Darshan Bhayati, 50 of just 22. Oh, and Tanmay goes, tries to go big. Nipun under the ball, an easy catch there. So after 7 overs, it's 84 for 1. Lost their first wicket, but in a very good position. And it's, as I take a look, only 3 fielders in the team, which means, folks, it's the batting power play. So the advantage now transfers to the batting team, an opportunity for them to exploit the gaps. Oh, but that is a battle that wins the bowler and not the batter. Sahil Parakh here winning the battle against Darshan Bhayati and getting his wicket. So 2 quick wickets. Could this affect the total? 85 for 2. It was just 80 for no loss and now quickly 85 for 2. 2 new batters at the crease. Less than 3 overs to go. Just what the bowling team needed. So Sahil Parekh and previous over by Shalva there.
And it's called a batting power play, but nothing going in the favor for the batting team this over. Sahil Parakh was almost on a hat-trick there. Could have gotten one also. But nevertheless, I'm sure, will be very happy with how the over has gone so far. That's another chance. Oh, that's a drop. That's a drop catch, and that's from a fielder that you would expect to be the safest of hands. And I'm sure both Sahil and Kavitsa himself will be disappointed with that result. A drop catch maybe. A drop catch maybe that could result in a difference of 10 to 15 runs. And he's now coming to bowl the over himself. Let's see if he can pay back for that. And as I was just talking about, Kavitsa definitely would want to get a wicket. It plays on players' minds. No matter how much they try, those catches that they drop, those mistakes that they make, it does play on their mind. But I'm sure none of that is happening to Kavitsa right now, because right after the drop catch in his bowling over, he gets a wicket in the first delivery. So they were about 80 for no loss, and now if you take a look at the scoreboard, they've lost 4 quick wickets. And that sometimes is the double-edged sword. That is the aggressive style of play. You live by the sword, you die by the sword. In this case right now, 4 wickets, quick 4 wickets. Losing wickets in clusters is never good. And especially when you're batting first and you want to finish strongly. That platform that was laid, that was set, now crumbling a little bit. Yes, and that's what happens. The pressure of so many wickets falling. Your mind is running on overdrive, thinking about what to do. Already maybe planning for the next 3 deliveries because you're in that situation. Oh, that's a wide, a good stop from the keeper. Definitely stopping 5 runs.
94 for 5. Last over to go. Excellent over by Kavit Podar. More than making up for that drop catch. Oh, what a delivery. Slower delivery, that one. The batter, I think, was already through a shot before the ball passed the stumps. Excellent, excellent delivery. And a good cover up. I'm sure the batter thought that it was going to be a pace on delivery. Oh, and the attempt. What is that? Oh, yes, that's a wicket. An anticlimactic end to Ajit's innings there. He was trying to aim for the boundary. Stepped out of the crease and quick work from the keeper, resulting in another wicket. So in the last 14 runs, they've lost about 6 wickets. The SN Yodhas. Oh, that's a no ball, says the umpire. Yes, it's outside the pitch. And nothing more better for a batter than a free hit in the last over. And he's already shuffled across. He tries to go really big, but it only goes up, not far. And that's a catch. And a beautiful throw, but a free hit means no wicket. Unfortunately, that catch will not be registered as a wicket. All that effort in vain. Last ball of the innings, SN Yodhas on 98. And this time he connects, and he connects well, sends it over the square leg fielder. 4 runs added, 102 they reach, and 103 to win for the ADP Warriors.
जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ AU। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ AU. AU करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. AU सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो, शुक्ला जी, अरे कल आना, आज बैंक बंद है। बैंक जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ AU। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ AU. AU करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. AU सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो, शुक्ला जी, अरे कल आना, आज बैंक बंद है। बैंक जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज। One zero three. Oh, that's a wide delivery. Really, really wide. Ample of time for the batter to make room and send it for 4. Towards that cover point region. For the next match, KPNG has won the toss and elected to ball first. So all the three tosses, the winning team has elected to bowl first. Let's see how that goes for the third team. Right now, the team that won the toss and elected to bowl first is in their run chase. They couldn't have asked for a better start. Oh, that's a good reply. Good reply from the bowler after the first two deliveries. Not up to the mark there this time. Dot ball.
Oh, that's a technically beautiful shot. Or after one over, the first over goes for 13 runs. Required run rate is 10, so well above the required run rate are the ADP Warriors. Let's see what this over has in store. New bowler is Yash Bora. He's one of the best persons playing this tournament. Very jolly. Let's see how he bowls. वाइड बॉल से शुरुआत. But he's bowling a good line. The plan is right. He wants to restrict Sahil from hitting on the leg side. Oh, there was no fielder on the mid wicket side and it went for a 4. There is a change in the field. Now mid wicket goes back and long on becomes mid on. Actually, the ball was very bad. It was Fuller. Again a full toss and he just times it for 4 over mid off. He is bowling full tosses. He has to change his length rather than changing the field. Now a short ball, well kept by Samyak. Just like his brother Sahil, well kept. Both are very good keepers. Good slower ball. Guided to for a single towards the fielder. Sahil will be regretting he could not play reverse on this ball. It was meant for a reverse, but he was not ready for it.
Ritik on strike. It is a right hand and left hand combination. There's again a field change. Long on goes back for the left-handed batsman and long off. Again a full toss. You can't keep changing the fields and bowl full toss. This is bad bowling, I would say. He had to make the ball land before it crosses the boundary. Rajesh sir is trying to explain the bowler how to bowl. It's a very good start for the chasing team. Kavit sir would be happy with this start. By signaled by the umpire. Changing the field on every ball and bowling full tosses would have to change. Could not connect this reverse, but it was a good over for batting team. So after 2 overs, it's 32 for no loss for the ADP Warriors. And playing exactly according to their required run rate. It's now gone down to 8.88, 71. एस भी दो क्यूआर कार्ड पेमेंट बैंक ट्रांसफर सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना, तो मैं तो बन गया ना चपरासी. Not banking with AU. एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट. Excellent ball by Jayesh Rajpal. Full outside the off. He has taken protection on the off, so he is bowling to the offside. Very well bowled according to the field. There will be a change in the field for the lefty. This will be a good contest to watch. It's a perfect matchup for Jayesh Rajpal, a left-handed batsman. And Ritik is connecting it well. And it's a wicket, as predicted by our co-commentator Saurabh Soni. Next batsman is Darpan Jain. Left-handed batsman replaces left-hander. Next batsman, Darpan Jain.
Full toss. He just times it for a single. Could have hit it, but it was a first ball. So he did not want to take any risks. What a ball! What a ball! For a time it felt Shane Warne came on the ground. What a ball! Best cutter of the day till now. Unless DB tries to bowl much better. Bora trying to cheer the team, lifting the team's morale. Actually, this is a good strategy by Sahil and team to play Jayesh, Jayesh Rajpal's over safely without giving him any other wicket, because he has a knack of taking important wickets at important times. Darpan on strike. Again a good matchup with the lefty. I can see only. Oh, very well bowled by Jayesh Bhai. Easy two by the batsmen. Very well run. So after 3 overs, it's 37. But this time they lose a wicket in this. Just 5 runs of the previous over. And the equation now is 66 of 42 balls still in the batting team's control, you could assume. And now it's the hero of the first innings. And DB brings himself to bowl. The captain of the team batted very well. Now we'll have to do it with the ball. Because after the great start they had, Sahil is batting left-handed. And there will be a change in the field now. I have only seen Akash Koile do this before this match. Now there's a second name added to it. Sahil Parak. Very well bowled. Very well. Perfect ball to a left-hander. Excellent bowling by Darshan Baheti. He has his personal cheer boy Kalpesh on the ground. Supports him everywhere. Now again the batsman has turned to being a right-handed batsman. What a ball. Perfect Yorker. Seems like it was a leg bio. Excellent bowling by Darshan Baheti. Leading from the front in with the ball now and first with the bat in the first innings. Excellent shot by Darpan for a single.
It's a good comeback by bowling team. They've restricted. Oh, what a shot by Sahil. It happens when you try to bowl every ball as a Yorker. You have to, you can miss some and give a full toss to the batsman as a free hit. There was neither. Covers goes to the sweeper cover and the reverse fielder comes in and the square leg fielder goes out on the boundary. Good change in the field. And it was a good change in the length as well. It's the end of the over. And at the end of 4 overs, it's 46 for 1. Equation is now 6 overs 50. फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बांधलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. AU AU करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. AU सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो, शुक्ला जी अरे कल आना, आज बैंक बंद है। बैंक जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ एयू. Samyak Parak coming to bowl. Sahil respects his little brother and takes a single. Oh, what a shot by Darpan. It was a low full toss. Again a full toss, doesn't time it that well, and a drop catch. Neve drops a catch. It was a sitter, I would say, but he didn't keep his Neve right. The foundation of the catch was not good by Neve.
And the suspected shot here is reverse, I guess, because it was a low full toss and it is a misfield. It goes for 4. Difficult ball. Bounced unvariably. Samyak is trying to bowl low full tosses, but he has to pitch the ball before batsman to make it turn. Left alone. Wide ball. Well kept by Jayesh Rajpal. Short ball, it turned a lot and it was wide outside off. Last ball of the over. It was a full toss, but only could take a single on it. So successful over for the batting team. 16 runs coming off that over. AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. AU करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री यूपीआय क्यूआर, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. AU सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. Not panic and chase it. Definitely. Just need to find the boundary at least once in the over and then wait for the bowler to make a mistake. And in this heat, bowlers do make mistakes. Next over, Alpesh sir will bowl right arm over to Darpan. What a shot by Darpan. It's out of the park. Again well predicted by our commentator Saurabh Soni. And this time trying to be a little cheeky there, Darpan. But only results in a single. But just as I was saying that it's important for the batting team to find a boundary and then put the bowler under pressure. Getting that boundary in the very first delivery. And 7 of 2. Required is just above 8.
Oh, that is a no ball. Oh. The umpire wastes no time to raise his arm and rubbing salt on the wounds. That's also a 4. So 5 runs added to their total, folks, and it's now 29 runs off 28 balls. It's a free hit. As noted by Pratik Patil, there hasn't been a second over by the same bowler in this innings. It was a shot, 4 runs. He, he covered his stumps and forced the bowlers to bowl on the stumps and used the field pretty well. Free hit indeed becomes a free hit for the batsman. Yes, excellent thinking. Excellent shot to the covers. Tanmay fields it well and throws it. And the batsman takes 2 where there was only 1. Good running in this heat. And the score is 80 for 1 right now. And at this same point in the previous innings, the SN Yodhas, after 80 for 1, lost 5 wickets for just 14 or 15 runs. And that's why the game turned for them. Can their bowlers this time turn it around? The equation is less than run a ball now. Oh! Everyone missed it. Darpan missed it. Jayesh Rajpal missed it and it is a bye. And 82 for 1 the score after 6 overs. 21 needed of 24. money every month. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो शुक्ला जी अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ एयू एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री यूपीआय क्यूआर, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है।
Short ball and a good shot. Saw the gap and it's a 50 for Sahil Parak. Second 50 in 2 matches on Shinde ground. Very good batsman Sahil Parak. Oh, it's a drop as predicted by our very own Praveen Nallaude. It's a dropped catch. And things just go from bad to worse for the bowling team. The SN Yodhas are almost out of the fight. But cricket is a funny game. You can come back at any given point. And we'll have to praise the chasing team here. They are chasing it down without Nipun coming to the bat. Coming to bat. As corrected by Girish Shinde. And look at that, the life for bowlers is so difficult. A good delivery there, edge but no wicket. And one bad delivery can just change the entire face of a game. I predict. It's a single. Well fielded by Alpesh sir. Restricting the batsman to only a single. Very quick single. Well run by Darpan. And it's the end of the over. End of power play as well. The score is 91 for 1 after 7 overs, and they just need 12 runs of 18 deliveries. Will they finish it in this over, or will they be a little careful and take it to the next one? I think they'll try to finish it in this over because run rate would also be a factor going ahead. Definitely. And when you have wickets in hand, you've only lost 1 wicket, you can go for the kill. You do have the license to attack. Yeah, but their next batsman is Nipun, so they'll have to finish on them by themselves. What a shot by Darpan Jain. What a shot. Yash Bora attempted very well, but the ball went very far from him. Keep going, Mr. Darpan. He will like to finish it on this ball itself. Oh, he tries to, but the ball is in the air. It's dropped short of the fielder and they take 2. They are making runs by running very well in this heat. It should.
And this dropping bug is as such that once you start dropping, it just keeps moving on to the other fielders. Butterfingers. Tries to go over the infield on the offside. Just gets an outer edge. That will result in a single. So just 2 runs needed. Oh, and will they run 2? They could have, but they choose not to. So just 1 more run needed now. Last effort left. One run to win, I guess. Because the field is coming in. And he still gets a single. So with that single, it is ADP Warriors who take this game and register their first win of the tournament and of the day. They win by 9 wickets and chase down 103 in just 8 overs. So at the end, you would say that they did not break too much sweat, did the ADP Warriors, and will be very happy winning the toss, restricting the Yodhas to 102, and now winning the game by 9 wickets, and I'm sure giving their NRR a big boost. Both the teams are requested for their next match, MSD Strikers and KPNG Blasters. Please set the fielders up. सुनो शुक्ला जी। अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ AU। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी, तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय। घ्या बांधलो ना शिपाई। नॉट बँकिंग विथ AU. AU करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे। हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी, तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय। घ्या बांधलो ना शिपाई। नॉट बँकिंग विथ AU. AU करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे। हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही। AU सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला। मनी 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 एव्हरी मंथ। विचार बदल आणि बँकही। शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो शुक्ला जी। अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक?
जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ AU? AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ AU. AU करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. AU सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो, शुक्ला जी, अरे कल आना, आज बैंक बंद है। SN योद्धाज. SN Yodhas, we would ask you to join us for the post-match presentation. The other team is waiting for you. You can resume your discussions after we finish the post-match presentation, SN Yodhas. Darshan, please note other team is waiting for you. This was a very close contest. Almost 100 was on board. So almost 100 runs were on board. The target was very good. In 7 hours, almost 80 runs were considered. So post that, what went wrong? Thank you, Nipun, for correcting. Yes, we fell short to close the innings really well. We were cruising at one point of time, and then after end of 10 overs, we were 100 odd runs for loss of almost 7 wickets. We lost 7 wickets in those 3 overs, and once the momentum was on their side, then with the quality of players they have, it was difficult to contain. We could have bowled really well, much better than what the caliber we have, and a bit more support from the fielding could have done the job, or at least we could have gotten the game closer. But congratulations to ADP Warriors, and boys will come back stronger. That's great. You have a very great players with you, and we will like to see a very great performance in upcoming 2 matches as well. Now the winning captain, Nipun. You have not batted. That was not an opening which you always do. So how the thing was with you? There is a format in the tournament that only 2 different openers can bat. So we decided according to the score that we are chasing, that who will bat and who will come 1 down, 2 down. Sahil plays the new ball very well, and he puts all the balls in the gap. So and they had a very good start, but in the last 3-4 overs we came back, and 100 is a decent score on this track. So congratulations team. That's great. Now the man of the match for the match is always Sahil Parak. Please. Team owners, please. RM, please. KP. Please. Yes. It's a privilege.
And now, fighter of the match for the fighter of the match is Darshan Bhaiti. So great. That's it from presentation ceremony. Let's look forward to the next match. Hello. Next over, the very great Tejas Bansal. तेजस बंसल लेकर आते हुए दूसरी ओवर ऑफ द इनिंग्स. ड्रॉप कैच. झुक नहीं पाए तेजस बंसल. अच्छा एफर्ट. और कीपिंग पे मैं क्या देख रहा हूं, बीबीटी. Oh, again a drop catch. 2 ball, 2 drops. Unlucky Tejas Bansal. But it was a good try on the boundary. Chinu cheering his captain. Excellent shot by Kanade. Out of the park. It was a good ball outside off, but was on a length to hit it perfectly out of the ground. Kiran Gargote is bringing the ball and throwing it beyond the fielder. Again a good ball, not giving any room. Just a single, very well fielded by Nagaraj Bhau. Dot ball. There is a discussion in the middle within the batsman after this dot ball. Maybe trying to his partner Kanade.
Excellent finish to the over by Tejas Bansal. Very good power play for the bowling team. Is 2 over 13 runs without a wicket. But only 13 runs. Now our favorite Chinmay Shah to the bowling crease. Just bowled one ball wrong, Tejas. After a 6, also he considered only 8 runs. He has also reduced the weight, some weight. He is going to gym with Tanish. Next over, Chinmay Shah. Oh, just a single. I will not say this was a catch, but it could have been attempted by the covers fielder, but it was very far. Atharva Sute on strike. It's a good shot and it's again a drop catch. I have seen 4 drop catches in this match within a span of 3 overs. It's almost as if the Blasters have taken a challenge as to let's see how many catches we can drop. I think this team is inspired by Punjab in the IPL. They are dropping many catches this year. Oh, Chinu took it personally and bowled the batsman without giving an opportunity to the fielder to drop one. Yes, the bowler said, I'll take matters into my own hand. Atharva bid coming to bat. Mahesh Babu has bet on him. Highest bid player. I don't know who is happier with the Atharva's wicket, Mahesh Babu or Chinu. Oh! If it was over BBT, it was over Burj Khalifa as well. Oh, it's a wicket. Chinmay Shah picking 2 wickets in the over. And coming to face him is Ajit Pariyar. There's a history, geography, science, maths, everything here. And as my co-commentator has told me, walking onto the pitch now is Ajit, and there is some history between Chinmay and Ajit. Let's see who wins this battle now. I think Ajit will play it safe like he always do. As he should. It's the last ball of this over.
और जर्सी नंबर 7 का एक खिलाड़ी होता था जो पीछे से गेम बदल देता था, और यहाँ पे चिन्मय आगे से स्टंप्स के गेम बदलते हुए आजकल अपनी वही टीम के खिलाड़ी लिए। ग्राउंड के बाहर से भी गेम बदल रहा है। Finally, Ajit showing respect to Chinu because he picked 2 wickets in the over and only 4 runs. Now, till now there were only medium pacers bowling. Now a true pacer has come, Nagaraj Bhau. Pace commander. Good ball and good shot for a single run. This is turning out to be a low scoring encounter unless Ajit hits. Ajit starts hitting from here. I think Ajit left it alone and it is a wide ball. BBT trying to give single. Excellent ball. Same ball he bowled a batsman yesterday and same ball hit on Ajit's legs. The batsman was very poor yesterday. Today the batsman was a better, somewhat better. Oh, and that's a misfield, so that will result in another extra run. I'll tell you, Kishan was, before 5-6 years, he was the best fielder on the ground. Now still he is the best because I am also on the ground. Oh, this was a ball to hit, but he missed it. Kishan fielding it very well and throwing it also quite well. Malpa is also here with us in the commentary box. He's been sitting from the morning. He had some practice in CSCL as well. Oh, he is bowling very well. Nagaraj Bhau with sheer pace and accuracy. And with that, 4 overs come to the end. It's 27 for the loss of 2 wickets. So after winning the toss and electing to field first, the bowling team will be very happy with their performance so far. But I only say so far because anything can happen this game. Is quite funny. Let's see now who the next bowler is for
The Blasters. Now my favorite bowler, Kishan Jain. He's become a spinner now. And you would assume that the sledging would be on the field where both the teams are batting and bowling, but Super Kings Premier League is a little different. We have sledging here in the commentary box. Shot. 6 runs. Atharva Bait hitting of second six of this innings. Excellent bet by Mahesh Bhai on Atharva Bait. He is bowling very short, Kishan. He'll have to change his length. Bowl a much fuller length on this wicket. Again a wide ball. Hello. 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 Not the worst result for the bowling team on a free hit. Just a single. So 4 extras in this over so far. Which means there are only 2 deliveries up. Where is this ball going? This ball, oh! It was teasing the fielder but always going out of the park there for 6 runs. If the fielder would have touched it also, would have been a 6. Because he touched the rope before ball came to him. Kishan is bowling very short. That's why Sahil used to give him only 1 over. And again a quality shot by Ajit. 4 ball, 23 runs. Kishan Jain. Yes, and overcorrecting after the previous delivery. Too short there in the previous one. This time, full toss swing and 6.
Last ball of the over. Atharva bet on the strike. It's been 5 balls and 24 runs. Would like to finish this over without a boundary. Oh, someone in the field noticed that 6 players were out of 30-yard circle. Only 29 runs, 28 runs from this over. Only. Till now the score was 4 overs, 27 runs. And this over alone gave 28 runs. What a turnaround cricket is. Chinu trying to cheer Kishan. Kishan giving us a smile. Might be a fake smile, but still trying to. Like Hardik Pandya. 5 overs, 55 runs. 2 wickets. बैंक जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। Not banking with AU. एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बांधलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. AU. Excellent bowling by Nagaraj Bhau. What pace bowling. True pace commander. Excellent bowling by Nagaraj Bhau. Excellent ball by Nagaraj Bhau. 2 good dot balls to a good batsman, Ajit. Again a good ball, only a single. So important for the bowling team after a big over to get some control back in the game, and exactly what's happening now. 3 deliveries, not a lot of runs. Oh, could not get more than a single on this full toss ball. A rare bat delivery, but still could not hit. Too much pace by Nagaraj Bhau. Excellent bowling. He's just not letting anyone hit him. Bowling outside off with pace. Excellent bowling by Nagaraj Bhau. Excellent spell by Nagaraj Bhau. Excellent spell.
He took a wicket yesterday. He is in form. Excellent spell by Nagaraj Bhau. 2 overs, 8 runs. 57 for 2 after 6 overs. And after an over that costed them 28 runs, just 2 runs coming in the next one. So excellent comeback. And all the courtesy goes to Nagnath there for a beautiful over. And Chinu bowling his second over and 7th over of the innings. Only 57 runs on the board. Now the batsmen have to charge. Oh. Ball went above the stump and that's why it was not a wide. But Atharva Bate would be regretting that he was not able to hit this ball. It was a bad ball on the leg side. Oh, what a shot by Atharva. Quality shot by Atharva Bate. And see what just one boundary does to a bowler. Need bowls. Bowls a really wide one. Oh, that's in the air. Fielder getting underneath it. But that's a free hit, unfortunately, for the bowling team. So they will have to be satisfied with that single. At least it's not a 6. I would say Atharva missed out on a free hit as well because it was a full toss ball and a free hit as well. YouTube man doing. And a single again. This ball was also on the legs, but could only manage a single run. Definitely. This ball was also on the leg side. This ball also deserved to go to the boundary. So 2 balls that could have been a boundary, unfortunately not converted. Oh, that's a beautiful delivery straight into the block hole, and he uproots the stumps. What a comeback by Chinu. 3 wickets in his spell. Oh, and that's a beautiful shot there. Very difficult to set a field for those kind of shots.
And but he is known for his reverse shots. And that's a signal for the batting power play. So after 7 overs, it's 69 for 3. And they did get a wicket, but Chinmay conceding some runs in that over. 12 runs. Now this will be a power play over. Only three players would be allowed outside of the 30-yard circle. And after 7 overs at 69 for 3, I'm sure that the bowling team is much more happier than the batting team. But as we saw, momentum can quickly shift. At 28 runs over would give them hope and give them belief they can do it again. Let's see, batting power play. Oh, that's a cracking shot. Beautifully played there towards extra cover. 4 runs and great start to this over for the batting team. Good comeback by Suhas sir. Excellent fielding by Prathamesh and good running by Mahesh Babu. Completing 2 runs. Mahesh Babu has proved a statement that a batsman can do anything for this strike. Everybody is learning something from Nipun Bhandari. Could not connect on a full toss ball. Very well bowled. Only 3 balls remaining of the power play. 2, I guess. Only 2 ball. Excellent ball by Suhas sir. What a Yorker. Full toss out of the park. Massive hit by Ajit. Massive. And a crowd catch there. Really well done by the boy and casually just takes the catch and walks back. I think he's a fielder. He was practicing on the ground a while ago. And he will make a really good ball boy in the IPL, I'm sure. But you are not trying to make him a player. How sad is this? You start small and then you dream big. करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ॲपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही.
एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है. सुनो. शुक्ला जी. अरे कल आना, आज बैंक बंद है. बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ. अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो. QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना. तो मैं तो बन गया ना चपरासी. नॉट बैंकिंग विथ एयू. AU. First ball dot. A very deceptive action there. Looks like it's coming in with a lot of energy. But bowls very slow. He tricks the batsman in this. Excellent bowling by Ashish. And a very poor fielding by Prathamesh. Ended up being 2, which could have been 1. And if anyone wanted to know why backup is necessary, that was the perfect example. 2 important runs saved for the team. In this tournament, Nagaraj Bhau is giving backup to everyone. He also gave it to Gaurav Shah. Again a dot ball. Maybe it was a strategic 2 given by Prathamesh. He wanted to keep Ajit on non-strike. Yeah, it was a correct shot. You can see that the fielder from point is not there. You have a third man there in the deep, not a point. Again a dot ball. Trying to hit reverse when there is a fielder there. Excellent bowling by Ashish. So the battle between the bowler and the batter at this moment is being won by the bowler. It's not over till it's over. Again a dot ball. Irrespective of what happens on this last ball, it is an excellent over. Yes, and that's the desperation of wanting a boundary. Just a wild slog, but all he could manage was some air. But I think Ajit was set here. He should have given Ajit the strike. And finally he connects. As I said, irrespective of what happens on this ball, it was an excellent over. Yes, just conceding a single boundary. 8 runs in the over. 91 the score and 1 more over to go, folks. Neeraj Dhadiwal coming to bowl the last over of this innings. And I can see his jersey number is 999, and you would hope that he gives lesser than 9 in this over to restrict them under 100. Let's see. The previous over was a great template, but this time it's Ajit on strike. Excellent ball by Neeraj Dhadiwal. Quality start for the over. I'll tell you, from the last 2 matches, I have seen excellent death overs. And it's a wide ball. Well left by Ajit. Bowling a great line, Neeraj.
Only 92 runs in 9.1 over. And he again fails to connect. Tejas didn't back up, so bowler didn't hit and get a run out of it. He was waiting for the backup to come. As per our legend, they are hitting very hard. As per our legend Mama, they are not looking to time the ball. What a ball by the bowler! What a ball! Excellent bowling. Not out. There was not even an appeal for the wicket. And he connects, but it will only be a single. Out. What a prediction again by Saurabh Soni. It has been that kind of a day. Very good over by Neeraj Dadiwal. Once he said, बैटिंग का पता नहीं बट मैं बॉलर अच्छा हूं, and he proved it today. So they've restricted, the Blasters have restricted MSD strikers to just 95. 96 to win in the second innings. And the next match is to be played between ADP Warriors and VB11. Would request the captains to be ready for the toss. एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बांधलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री यूपीआय क्यूआर, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो, शुक्ला जी, अरे कल आना, आज बैंक बंद है। बैंक जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बांधलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. एयू.
एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो. शुक्ला जी अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ एयू. AU एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी, तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बांधलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो. शुक्ला जी अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी, तेव्हापासून बँकेचंच तर काम कर. First over, Divesh Dave. On strike, Rahul Kataria. Oh, just beat the bat. Again a edge. Khammabau stopping the ball like a goalkeeper. Kiran Gargote, who was standing on long on, was sent to mid off by the regular long on fielder. There is a change in the field. Sweeper cover goes back and long on comes in. I am not a captain anymore, only commentator. And it's a wicket. Doesn't matter what the field was. He just picked his thumbs out. Excellent wicket this. Very big wicket in the context of this game. Divesh Dave. He is Bhuvi of Superkings Premier League.
He just bluffed the batsman, I would say. He got the fielder outside off to cover the boundary on the offside and bowled it on the leg stump. And I think he did the batsman there. Very well planned wicket. DB trying to wash his bat because Malpa also played with it. Excellent bowling by Divesh. Excellent. Divesh is not Divesh any runs. And only Pikesh wickets. Oh, what a slower ball. But this was by Divesh. Excellent bowling. I think it's the end of the over, and only one run was scored of this over, and one ball is remaining for this over. Conceding only 2 runs and picking a big wicket of Tejas Bansal, who can now come towards commentary box. Giving a very cute smile to Girish, as per Girish Shinde. Kiran Gargote, only batsman coming to bowl. Darshan Baheti giving water to Mahesh Baigude. What a sight to see. Excellent shot, but very well fielded by Ajit Parihar. He has learned this round the wicket bowling from bowling in the Rajguru Premier League, Rajguru Nagar Premier League, where he conceded 30 runs of a over. Catch and taken. Excellent catch by Divesh. What a bowler, Kiran Gargote. Not giving flying kisses this time. In CSEL, he was giving flying kisses to every wicket. So the Blasters now losing their second wicket for just 3 runs. 3 for 2 after 1.2. And now coming to bat, my favorite batsman, Kishan Jain. Excellent ball.
And good shot for a single run. Very good fielding by Khamma Bhau. Our very own Khamma Bhau. Oh, it would have been the end of this match. It was a good try by Divesh, but just above him. Mahesh Bhau would have taken it easily, or there would not have been any hopes as well. It's a very crucial phase for the batting team here. They can make or break this game. Another wicket here would have dented their chances of making this run chase. The match now depends on Nagaraj Bhau. He should play it very smartly now. There's a change in the field, but Mahesh Bhau denies it. And excellent shot. A boundary on the cover's direction. It's a 4. An umpire's decision is also 4. Kiran was asking for that fielder, but the captain denied it. I would say these 4 runs should go in Mahesh Bhau's bucket. Doing Shah Rukh Khan pose, Kiran. Finally a player where he wanted. Last ball of the over and single. I would say everybody is learning from Nipun Bhandari. Smiling very cutely here, Nipun Bhandari. And the score after 2 overs is 14 for 2. So still very much in the bowling team's favour as things stand. And it's important for these two batters that they just bring some calmness. Maybe play out an over or two. Try to run the singles, even though it will be very difficult as the sun beats down here. It's very, very hot. The condition is not easy at all. Mahesh Bhau comes into the attack. Great decision by the captain to bring himself. छह run. Full toss. Kiran Gargote signaling from long on that it is a 4 and umpire changing it accordingly. They don't want flying kisses from Kiran. Drishtikon.
Atharva Sute on the square leg region, trying to cover. Ball. And Mahesh Bhaut takes a long run up. What a shot! What a shot by Nagaraj Bhaut. Again a 4. And as per Nipun Bhandari, this over is Arya Par. Like his batting was in the first match. No batting. So the score right now is 22 for 2 after 2.2. It's twos everywhere. But the batting team will want fours or sixes. Still can't get over that shot over extra cover. While not giving the batter any pace there, making them use all their energy, and it's not easy because conditions here are really extremely hot. So your energy saps out quicker. So important that all the players stay hydrated. Oh, and that's a low full toss. Straight to the fielder at square leg. Good throw from the deep and will only be a single. But not the worst thing if they just consolidate for this over. Full toss and out. Oh, and look at that, straight into the hands of the fielder. I think that fielder is Yash. Yash Shah. He could not have placed the ball better for the fielder and the bowling team. Full toss, outside off. And straight into the fielder's hands. 25 for 3 after 3 overs. It was an expensive over, but it brought a wicket to at the end. So everything was covered. As predicted by our legend Amit sir, if Nagaraj Bhaut gets out here, Jayesh Jaju comes to the batting crease. 7 number behind his back.
Again a full toss, but could not hit it beyond the boundary. Atharva has a knack of picking wickets on a full toss. This we have seen on every ground. Shahu, Tembekar, now Shinde. Oh, Yorker! Batsman yorked himself. Because the batsman's name is Jaju. Oh, and they tried. He tried to play towards fine leg, but couldn't get it fine there. Straight to the fielder at square leg. So just another single. But I don't think there's a need to panic here for the batting team, because if Nagaraj Babu plays till the end, he'll chase it by keeping 1 over. Reverse. What a slower ball by Atharva. Nagaraj Babu gave a signal of hitting a reverse 2 hours before the ball came. So Atharva adjusted his length and his pace. Well adjusted by Atharva Sute. And it's an excellent wicket by Atharva Surte. Big wicket by Atharva Surte. And an excellent catch by Jinesh sir. Yes, and you saw that they celebrated this wicket with an extra little bit of energy because they know how important that wicket of Nagnath is. In this kind of a run chase, it is half the battle won now, with Nagaraj Babu into the pavilion. But still have to see how the batting team takes this chase on beyond this point. Atharva Sute, I tell you, he has a knack of picking wickets every time he bowls. Some X factor he has by which he delivers every time for his captain. Excellent single. Good over by Atharva. Mahesh Babu coming to bowl again. No. Coming to discuss with his captain. 28 runs for the loss of 4 wickets for the KPNJ Blasters. The equation is 68 needed of 36 balls. I'm sure they have a lot of belief, but do they have the wickets in hand? Anything can happen in cricket. We have seen some excellent matches here, and we are bound to see one more. 36 balls, 68 run, very chaseable, but they have lost too many wickets, I would say.
A tricky chase this one. Due to this loss of many wickets, now the batsmen have to play very responsibly for few overs now, and they are doing so. It was a chance, but Ajit came forward to pick. I think he didn't pick the catch. If he would have been on his position, it was a, I would not say a sitter, but it was a half chance. And in such moments, sometimes these half chances just stick in the hand. But No. you don't know Ajit, that's why you're talking this way. Full toss ball and could not connect that well, which he would have liked. Oh, no ball and a six. Free hit. Jay Jaju. A different kind of a Jaju here. Every Jaju in town is in form. No change in the field because the ball went out of the field. Kiran Gargote. Short ball and it'll go for the bound. Oh, excellent over this for the batting team. 5 balls, 24 runs from this over. The batting team is in the game again. Now we can hear some noises from the batting dugout. Until now they were silent. Oh, and
Both the batters choosing not to attack on this delivery, choosing to play it safe. But folks, this game is coming alive. 30 balls, 49 runs, 43 runs to win. So this is going down to the wire. This is going to be a nail biter. Ashish Outi bringing a tumbler on the ground. This is the beauty of SPL tournament. People who play together in CSEL play against each other here. घ्या बांधलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. AU करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ॲपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. AU सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है. सुनो. शुक्ला जी. अरे कल आना, आज बैंक बंद है. बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ. अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा. Short ball missed. A missed opportunity by Jayesh Jaju. It was a gift trapped by the bowler there for the batter. But But he Jayesh sends didn't that want same to. gift back as a return. A dot ball, 2 dot balls back to back, so pressure now on the batter. I don't think it's a pressure situation now because he only needs 43 runs. Single. He's rotating the strike very well. And do not forget there is Chinu still pending to bat. Pending to come. And all the loose batsmen like Kishan are out. Shot! Excellent shot by Prathamesh. He'll try to take two, but no. Good fielding by the fielder there. Oh, he tried to pull this one and 6 runs. I think the ball traveled because of the air, wind, tornado. Mahesh Babu covered the ground pretty well, but couldn't complete the catch like Shreyas Iyer would. Or Nipun could. Those 6 runs could prove to be very, very important. Excellent, sensible batting by Jayesh Jaju. First Jaju who is batting sensibly here. So 6 overs, 62 for 4. The equation now reads 34 runs needed of 24 balls, and the batting team is now controlling this game. The partnership is 35 of 14 and they need 34 of 24. So judging by how things are going right now, it doesn't look like they
are under a lot of pressure and a small confidence there in the field. And it will be Atharva who gets the ball. This is a very important over in the context of this match. This over could decide the fate of this match. It's just before the power play. They would like to have some more wickets, but the batsman would also have to play this smartly now if they want to chase it down. Good batting by Jayesh, trying to rotate the strike. Only 33 runs required in 23 balls. Two new bowlers to come. And a power play over after this. Good ball by Atharva. He's bowling pretty well, Atharva. Oh, that's a really good fielding. They're attacking the ball and deciding to stop it and not go for the catch. Important, because right now you need to increase the gap between the runs and the balls. Excellent try. And it's a 4. What a shot by Prathamesh. बहुत ही अंडरग्राउंड प्लेयर है, नीचे जा जाके मारते. Sensible batting by Prathamesh, trying to take this match deep. Jayesh is also playing very well. There's a change in the field now. Covers goes back and the third man comes in. Full toss ball, but he just wanted a single. "18 balls, 25 required." I think you have to put bad balls out of the boundary. They are trying to make it look sensible, but I think last ball was hittable. Kiran bowling the next over, a power play over, a very important over. 3 fielders that are out are all on the leg side. Long on, mid wicket and square leg. Kiran Gargote bowling right arm round with 3 fielders on the leg side. And bowling a short ball.
and it could have been stopped, but the fielder missed it, and it goes for 4 runs. It should have been stopped if they wanted to stay alive in this game. Were a little casual there in the deep, and I'm sure the bowler's very disappointed with that. I think that it's a bad line to bowl around the wicket and bowling it on the stumps and bowling it short. Yes, and it looks like the bowler has listened to what Yeah, the now commentators have to say. Sensible batting, this I would say. Yes, and Excellent batting, and the throw was very poor. Very bad throw. Gave away a run extra. yes, and that is not so sensible from the fielding team. Awareness, game awareness is definitely needed. You need every player to be switched on in such moments. I think the shoulders are getting lower and lower ball by ball. They'll have to pick their team up and give their 100% in the last phase of this match. And a excellent catch. What a catch. What a comeback by the fielding team. A situation like this could bring every player in the game again. Yes, you were talking about how their shoulders are dropping, and I'm sure that this catch will lift up their spirits and lift up their hopes. Next batsman, Chinmay Shah. Perfectly set up for finish for a player with a number 7 behind his jersey. It's actually just a matter of 15 ball, 19 runs required. These 3 balls by Kiran are very important. Trying to bowl a slow ball. A good innings by Jayesh came to an end with an excellent catch by Atharva. Beat. It was from his over when the batting team came back into the match. And it is his catch maybe that could bring the bowling team into the match. There's a change in the field. Yes, and a very big discussion between 3 players, bowler captain and owner and the team owner. So all the stakeholders giving their inputs. Let's see what the result is. Oh, and this is in the gap. No. And the batter was doing the right thing, wanted to play towards square leg, I'm sure. But it could not connect it well. Otherwise, it would have been a boundary. But it was a good 2 runs as well, because now only 17 is required out of 14. It's now the batting team's match to lose, I guess. Yes, definitely. If they do something like Rajasthan Royals and bottle it in the end. Good ball by Kiran and a good call for a run by Chinmay Shah. Prathamesh didn't think there was a single, but Chinu forced him. 16 run requires of 13 balls. What a ball by Kiran. Again there is a change in the field. Long on comes in and the square leg goes back. He has to bowl a good line here to restrict the batsman from hitting in the long on region or the covers region.
And it's a wicket. What a comeback. Good comeback by Kiran Gargote. And could you call that a rush of blood? Yeah, I guess because this was the last ball of his spell. He could have easily taken the single and made sure that he faces two new bowler. I think here चार्जेस भी दो क्यूआर कार्ड पेमेंट बैंक ट्रांसफर सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना तो मैं तो बन गया ना चपरासी नॉट बैंकिंग विथ एयू एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम मतलब फटाक से एयू हाँ जी शुक्ला जी सोच बदलो और बैंक भी जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचं तर काम करतोय घ्या बांधलो ना शिपाई नॉट बँकिंग विथ एयू एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री यूपीआय क्यूआर ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे हो पाटील साहेब विचार बदला आणि बँकही एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट ते पण दर महिन्याला मनी 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 एव्हरी मंथ विचार बदल आणि बँकही शुक्ला हाँ जी जी बंद है सुनो शुक्ला जी अरे कल आना आज बैंक बंद है बैंक जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो क्यूआर कार्ड पेमेंट बैंक ट्रांसफर सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना तो मैं तो बन गया ना चपरासी नॉट बैंकिंग विथ एयू एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम मतलब फटाक से एयू हाँ जी शुक्ला जी सोच बदलो और बैंक भी जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचं तर काम करतोय घ्या बांधलो ना शिपाई नॉट बँकिंग विथ एयू एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री यूपीआय क्यूआर ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे हो पाटील साहेब विचार बदला आणि बँकही एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट ते पण दर महिन्याला मनी 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 एव्हरी मंथ विचार बदल आणि बँकही शुक्ला हाँ जी जी बंद है सुनो Oh, that was so close. Yet so far. Excellent attempt by the keeper there, the captain, Mad Max, putting everything on the line. He almost grabbed it. Almost grabbed it, just popped out. Oh no! That's the deaded arm of the umpire being raised to signal a no ball and 11 balls, 14 runs to win the match. A nail-biting match here. oh, that's a lucky save there. Very wide that delivery. The only saving grace was that it was dipping and a little slow. So free hit results in no run. And there's a chance to take two. The fielder is running from the deep. Excellent effort. Atharva there. Nine balls, 13 runs. Still anyone's game.
What a swing. Wow, what a shot that is from Chinmay. Swings it across the leg side, and that's a big six. Brings the equation down to single digits. Oh, and Chinmay calling it a no ball before the umpire could raise his arm. But definitely a free hit. Just five now. Only 5 more runs to win. 8 balls to go. 2 extras, 2 no balls. Costing the game. Free hit to BBT. Free hit, full toss, and out it goes, and that's a win. Again a no ball. Finish. Match is finished. That's a no ball, and it won't be a free hit because the game is over. Restricting the team for a below par total, and then finishing their run chase with 7 balls to spare. It was a hard-fought win for KPNJ Blasters. And the two teams shaking hands now, and I would request both the teams to quickly join Darshan for the post-match presentation. Darshan is all ready and waiting for both the teams, and I would request the next match, matches, the two teams to please take the field as quickly as possible. शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। Not banking with AU. AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी, तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय। घ्या बांधलो ना शिपाई। नॉट बँकिंग विथ AU. AU करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे। हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. AU सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला। मनी 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 एव्हरी मंथ। विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी, जी बंद है। सुनो, शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। not banking with AU. AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी, तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय। घ्या बांधलो ना शिपाई। नॉट बँकिंग विथ AU. AU करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे। हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. AU सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला। मनी 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 एव्हरी मंथ। विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी, जी बंद है। सुनो, शुक्ला जी,
अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री यूपीआय क्यूआर, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो. शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री यूपीआय क्यूआर, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो. शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री यूपीआय क्यूआर, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो. शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब The best. May I have the man of the match, Chinmay Shah, Ajit. Ajit. Ajit, the captain of MSC Strikers. Well done, Chinmay. We have the fighter of the match, Kiran Gargote. Keep learning more is what Kiran Gargote thrives on. Very well done, Kiran. That's it from the post-match presentation. We have the next match starting.
So game number 4, ADB Warriors VB 11. Once again, VB 11 have won the toss and elected to bowl first. So they're backing their strengths. They believe that bowling can do the job, can restrict ADP Warriors, a team that won their previous encounter with 9 wickets to spare. So they are a strong batting unit. They definitely have their task set up, and he moves across, shuffles, and that's a 4. That's a great shot by Nipun, does not waste any time. And it's such batters who have such shots in their repertoire that make lives of bowlers so difficult. It was a good delivery, good length delivery, nothing wrong with it. But the margin of bowlers these days, the margin for error is almost nothing. Oh, and that's a wide one. This time takes full toll of it. That's that's because the previous delivery, which was a good delivery, that went for a boundary. That just puts off a bowler. And in the overcompensation, sends up a full delivery wide on the offside. No one at the boundary and 4 runs. And make it 4 more runs to their total. So it's 15 runs, 15 of the first over. So once again the VB 11, after electing to bowl first, start on an expensive note. So finally some vindication for VB 11. They've elected to bowl first. And they get the wicket off Nipun. He didn't come to bat in the previous innings, and he came out here with some purpose. I'm sure with some hope. But has to walk back with it now. An early breakthrough, and you can see what it's done to the VB 11's morale. And why not? When you get such an important wicket, such a big batter, Nipun can change the game in a matter of balls. So Mangesh, who was expensive in the previous game, and he did get a wicket, but it cost him a lot of runs. This time, no runs. Giving them a breakthrough straight away.
What a shot that is down the ground. No chance for the fielder. All he could do was watch it sail over his head. Right in the slot. It's almost like as if Pushkar forced him to ball that delivery. Oh, that's an excellent reply. The umpire nods his head. So 6 and out for Pushkar. What a delivery that from Mangesh. So he doesn't get just one, he gets two for his team. So a big shock and a big knock to the ADB Warriors. Very early in the innings. 2 wickets down now for this batting team. So the score is 23 for the loss of 2. One more ball to go in the second over. Oh, that's a big wide. It's Darpan Jain, the new batter on strike. Oh, he could have hit that ball anywhere, but he hits it straight to the fielder. So not a lot of harm done. In fact, an excellent over. A lot of harm done to the batting team in this one. 25 for 2 at the end of 2 overs. 10 runs coming off this one. More importantly, 2 wickets coming. So after 2 overs of pace, it's time for spin into the attack. Let's see if this brings them more wickets or this results in some boundaries. Definitely ensure that these batters are not going to sit wondering. They are going to opt for the aggressive route. And that's a wide delivery.
They would want to keep the extras under control. Oh yes, excellent delivery. A full ball. Not enough room. Straight to the fielder, and they don't take another run. Once again, bowling to his field, straight to Jatin. Jatin misfields it. That results in another run. Oh, that's a big shot. One bounce, and yes, it's a boundary. So not one, but too many changes to the field here. Point goes deep, long on, long off comes in to mid off. There's now extra cover. Oh, but no matter what your field is, if you don't ball a legal delivery, there's nothing that can help you. So once again, extra delivery, once again a free hit, once again a chance for the batters. That's a wide, but the free hit will continue. Oh, and look at that. He's announced the shot that he's going to play maybe last night. But still, the result is exactly what he wanted. 6 runs. And 6 beautiful runs, I might add. $44 for 2 after 3 overs. से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ. अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो. क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना. तो मैं तो बन गया ना चपरासी. Not banking with AU. एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. मतलब फटाक से एयू. हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बांधलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू.
That's a good stop. Really, really good stop. That's beautifully driven down the ground. Showing the full face of the bat. The umpire signals for 50 up for ADP Warriors. 50 in just 3.4. So even though they lost those 2 early wickets, their current run rate, their scoring rate has not taken a hit at all. It's almost 13 and a half right now. That's a good comeback. Good comeback by the bowler after being hit for a 4. A leg by. If there was DRS, I'm sure that was absolutely plumb. Despite the boundary, overall it's a very good over for VB11. Just 7 runs coming off this one. And at the end of 4 overs, it's 51 for 2. 51, and they would want to double it and I'm sure add more runs to the 100. Conditions not that easy at all. It's really, really hot, really, really humid. So the bowling team would want to make sure that they make the batters run singles, not hit boundaries, so that they spend their energy and AU करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ॲपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. AU सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट. what a delivery that is. Look at that spin on the delivery. Are we in Pune or are we in Chepauk? Oh, but this time he chooses to bowl a full toss. Oh! That's a catch, that's a drop, that's a 4. The bowler made the mistake first. Bowled a full toss. And the batter made a mistake there, almost sending it to the fielder, and the fielder making a mistake by dropping it. So mistakes all around, but at the end, only the bowling team suffering. Just tells you how unforgiving it is for bowlers.
This goes along the carpet. But enough time to take 2 runs. Oh, and long off has been sent even more wide, so there's a huge gap. So if this ball is full and straight, just cutely tapped for a single. Not able to control their extras. Oh, this time he showed his stumps once more, but not a sweet connection, so it will only result in a leg by and 1 run. But look at the guts of the batter to expose their stumps so early. Last ball of the over. Nicely glanced towards the leg side, and they're making them run. They're making them take those doubles. So at the end of 5 overs, it's 62 for 2. So the first ball of the over results in a boundary, and that's never ideal. Never ideal for the bowling team. Especially now at the time that you want to apply the brakes on the scoring. Instead, helping them accelerate even more.
Counting their fielders. And let's see what delivery this is. Looks like square leg has come in. So it'll have to be full, have to be straight. Yes, and bowling according to his field. But look at that running. Are they going to take two? Oh my God, excellent running. Sahil and Darpan showing their fitness, showing their stamina. And I'm sure that the dugout needs to be ready with water bottles because they will need it at the end of this over. Excellent running between the wickets by these two batters. There is no way any person watching this can do but appreciate. It's not easy at all, but they have not thought about themselves. They've only thought about the team. And you can see they're down on their haunches, and why wouldn't they be? हर एक रन जरूरी होता है. And they're showing that they believe in it. 74 for 2 after 6 overs.
Once again, this was a full toss delivery, but straight to the fielder. It's been a good over so far. Just 4 runs of the first 4 deliveries. Oh, that's straight down the ground. Will it be stopped? No, it cannot be. Bounces over the fielder. So after 4 good deliveries, the batter said, we need a boundary. 82 for 2 at the 6.5 overs mark. One more ball to go in the 7th over. Still a good over, just 8 runs so far. Oh, and that's a 4 bounces over the fielder. It's almost as if Sahil knew exactly where that ball was going to come. And now it becomes an expensive over. 12 runs coming from this one. 86 for 2 after 7 overs. Sahil is batting on 36, Darpan on 21. Their partnership is 63 of just 32. Anand and Mangesh both have an over left. And so does Jatin. So let's see how they manage these next 3 overs. Just 14 runs away from the 3-figure mark. Oh, that swung over the offside. No one is there in the deep except the player from long off. He ran, but the ball outruns him. Full commitment shown, but the result still a 4. So, an expensive start to the over. The first 3 deliveries costing them 8 runs.
Oh, that's an excellent delivery. Straight to the fielder in the cover position. Into the block hole. Yorker length. 2 more deliveries to go on this one. Oh, that's in the air. 2 fielders converging. Who's going to take it? Oh, what a catch! Wonderfully judged there by Vishal, and it was in the air for a very, very long time. And also felt that because of Mangesh being there, he could have been put off, but absolute concentration on the ball, resulting in an important wicket. Sahil walking back, the man of the match, player of the match rather, in ADP's previous game, in their first game of SPL Season 6. So 95 for 3 now after 7.5. Anand will be really happy that even though he conceded those 2 boundaries, he got a wicket to show for them. Once again, Vishal, they're making a good stop. So we come to the end of the 8th over, 97 for 3 after 8 here. Not a bad position at all for ADP Warriors. 30 of 17, Darpan Jain. He's still on the field, still on the pitch. And with him, the new batter who's just come is Ritik. Let's see if he can dance like Ritik and make the bowlers dance to his tunes. And that is a 6. Yes, the umpire raises his arms there. 6 runs he signals. Absolutely short, that delivery. So much time to rock back on the back foot. It had 6 written all over it.
103 for 3. Oh, look at that tennis ball bounce. वो bounce ऐसा होता है कि you'll maybe have to keep not one but you have to keep two fielders there. And if this is the line that he's going to ball, all the players on the offside are just spectators. And look at that. Look at that. The result is only going to be one thing when he exposes his stumps. 4 runs. It is going to be a boundary. And look at that. The bowler saw the stumps there, but he still followed the batter. And this cat and mouse game between the batter and bowler, it's the batter who's winning the battle. Oh, this time, the bowler wins it. Last ball. Oh, and he's disappointed with himself. But at the end of the 9 overs, sorry, it is 112 for 3, 112 for 3. After 9 overs, last 6 balls to go. What will ADP Warriors give VB 11? Last 5 balls to go now. It was a good delivery to start proceedings for the bowling team. VB 11. Oh, trying to go for the big swing there. He could see that gap over backward square leg. And they decide to only take 1 run this time. Otherwise, they've been running some quick twos, these both. Maybe doing the right thing because they want to save energy to hit those big shots. Oh, beautiful shot. But the fielder's ready there. And this time, oh, he's out. Good throw from the deep and Sagar doing the rest there, hitting the stumps.
That's in the block hole. Mangesh tries, but the ball jumps over. So apart from that 6, it's been a really good over from Sagar. Oh, this time couldn't connect it. And I think the fielder started a little late. Oh, unfortunately they slipped. Oh, but unfortunately for them, he misses the ball and the keeper now racing and wins that race. So comedy of errors in the end, but it looks like they ended it with 2 runs. 124 is what they finish at. So VB11 had won the toss and elected to field first in their previous game. And they conceded 138. This time they concede 124, so they have improved. But what they need to improve is their chasing skills, because they were unable to chase that total. 125, that magic number that they are looking for. Let's see if this time it's a different story. ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो. शुक्ला जी अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ AU. AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी, तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ AU. AU करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. AU सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो. शुक्ला जी अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ AU. AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी, तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ AU. AU करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. AU सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही.
शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो शुक्ला जी अरे कल आना, आज बैंक बंद है। बैंक जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ एयू। AU AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी, तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बांधलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ.
विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो. शुक्ला जी अरे कल आना, आज बैंक बंद है। बैंक जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ एयू. AU एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
हॅलो 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 येतोय. हॅलो. उत्कृष्ट पद्धतीची बॉलिंग करतोय तो विक्रांत वर्मा. पाहूया पुढच्या बॉलसाठी. अंपायरचे हात समांतर आणि या धावा मिळतात अवांतर. पवन मिरचंदीचा लॉंग साईडच्या दिशेने आणि उत्कृष्ट पद्धतीचा कॅच या ठिकाणी दर्पण जैनचा. उत्कृष्ट झेल टिपला या ठिकाणी दर्पण जैनी. पुढचा फलंदाज येतोय मंगेश शिंदे. पुढे गेला का मॅच? 39 बॉल 84 धावांची गरज या ठिकाणी. मंगेश शिंदे ऑफ साईडच्या दिशेने टोलवलेला चेंडू. एक धाव पळून पूर्ण. दुसरीचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला नाही, पण पाहूया उत्तम प्रकारे खेळतोय तो. हॅलो हॅलो एवढं मोठं बोलायला लागतं. घासा जायचा मला. रिव्हर्स अटेम्प्ट मिस हिट, परंतु एक धाव पळून पूर्ण. उत्कृष्ट पद्धतीचा गोलंदाज या ठिकाणी विक्रांत वर्मा घट्ट बॉलिंग करतोय. मंगेश शिंदे ऑन स्ट्राइक. पाहूया पुढच्या चेंडूसाठी काय करतोय. लेग साईडच्या दिशेने टोलला चेंडू. एक धाव पळून पूर्ण. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण ठिकाणी श्रीपाल नहार. उत्तम फेकी. एक धाव पळून पूर्ण आणि घट्ट बॉलिंग या ठिकाणी विक्रांत वर्मा याची. घट्टवर पाहूया आपल्या संघासाठी पुढील गोलंदाज कोण येतोय. निपुण भंडारी. आपल्या वैयक्तिक पहिली आणि आपल्या संघासाठी 5वी ओव्हर घेऊन येतो निपुण भंडारी आणि ऑन स्ट्राइक ला ऐकतो मंगेश शिंदे. पाहूया अजूनही यॉर्कर लेनचा चेंडू. एक धाव पळून पूर्ण. दुसरीचा प्रयत्न. बॉल कलेक्ट करताय लक्ष्मण सर आणि उत्कृष्ट फेकी. एक धाव. ऑन स्ट्राइक ला येतो आनंद आयमा. या रन चेस मध्ये लीडिंग करतात. उत्कृष्ट चेंडू. कव्हरच्या डोक्याच्या वरनं 6 धावा. षटकार या मिळाल्यात 6 धावा. निपुण वरती चढवलेलं हे आक्रमण आनंदाय मायाने. व्हॉट अ शॉट.
फुल्लन पद्धतीचा चेंडू त्याला कव्हरच्या डोक्याच्या वरनं 6 रनासाठी मारलाय. रिव्हर्स अटेम्प्ट परंतु काही समजू शकलेला नाहीये आनंद दायमा. उत्कृष्ट चेंडू, निर्धाव चेंडू. अजूनही जिंकण्यासाठी 33 बॉल 74 रनांची गरज. अजूनही सामना समांतर. फुलटा चेंडू लॉंग ऑनच्या दिशेने डोक्याच्या वरनं जातोय 4 रन. उत्कृष्ट बॅटिंग. आनंद दायमाच्या बॅट तळपते या ठिकाणी. कॅप्टन आणि बॉलर मध्ये थोडीशी वार्तालाप होते या ठिकाणी, कारण आनंद दायमा उत्कृष्ट पद्धतीचे फटके खेळतोय. याच्या आधीचा चेंडू त्याने कव्हरच्या डोक्याच्या वरनं 4 रन मारला होता आणि आत्ताचा लोंगा यांच्या डोक्याच्या वरनं 4 रन. पुढचा चेंडू पुढचा चेंडू निपुण भंडारी ऑन स्ट्राइक. दायमा उत्कृष्ट चेंडू, काही समजू शकला नाही आनंद दायमा. पुढील चेंडूला जर 6 मारला तर सागर संकलेच्या यांच्याकडनं 1000 रुपयांचं पारितोषिक. फुल लाईन पद्धत चेंडू, 1 धाव पळून पूर्ण. कव्हर्सला आडी या ठिकाणी मिस फील्ड. आडी या ठिकाणी गच्चाळ असं क्षेत्ररक्षण आणि 4 धावा. आणि या ठिकाणी संघ मालक स्वतः होते. या ठिकाणी अडवण्याचा प्रयत्न परंतु बॉल जातोय सीमा पार. या मिळाल्या 4 धावा. आणि स्वतः संघ मालक विशाल भुरड या ठिकाणी पाणी पाजण्यासाठी जातात. आयकॉन प्लेयर पुढील बॉलर विक्रांत वर्मा, घट्ट बॉलर. पाहूया आपल्या संघासाठी काय योगदान देतोय. अजूनही संघाला लागतात 30 चेंडू 66 धावा. पाहूया मंगेश शिंदे ऑन स्ट्राइक. उत्कृष्ट चेंडू लॉंगॉनच्या डोक्याच्या विरुद्ध 6 धावा. व्हॉट अ शॉट बॉयज, व्हॉट अ शॉट. मंगेश शिंदेची बॅट तळपते या ठिकाणी. 6 धावा कव्हरच्या डोक्यावरनं. पहिल्या चेंडूवरती केलेलं आक्रमण. अजूनही 5 चेंडू या षटकातले बाकी. पाहूया मंगेश शिंदे काय योगदान देतो आपल्या संघासाठी. पुन्हा त्याच दिशेने. व्हॉट अ शॉट बॉय, व्हॉट अ शॉट. 6 धावा. छत्रपतींचा छावा आणि या मिळाल्या 6 धावा. मंगेश शिंदेची बॅट तळपते. अजूनही जिंकण्यासाठी लागतात 28 चेंडू आणि 54 रन. "28 balls and required 54 runs. What a batting by Mangesh Shinde. With the wind टार्गेट करतोय मंगेश विक्रांत वर्माला. विक्रांत गती देत नाहीये, स्लोवर बॉल करतोय, पण मंगेश बॉल खाली येऊन उत्कृष्ट पद्धतीने ऑफ साइडला खेळतोय. कम ऑन गाईज. बॉल जर नसेल तर सामना नवीन चेंडूवरती खेळवला जाईल नियमानुसार. विक्रांत वर्मा
पाहूया पहिले 2 चेंडू 2 षटकार मंगेश शिंदेच्या बॅटमधनं. पुढचा चेंडू मंगेश काय करतोय. फुलटा चेंडू मिस हिट आणि एक धाव पळून पूर्ण. खराब चेंडूचा लाभ घेऊ शकलेला नाही मंगेश. आता आनंद आहे स्ट्राईक वरती. तो खेळतोय 16 बॉल 38 धावांवरती. पाहूया कव्हर्सचा मारलेला चेंडू. एक धाव पळून पूर्ण. उत्कृष्ट पद्धतीची फेकी. दोन षटकारानंतर हा कमबॅक आहे घट्ट बॉलरचा विक्रांत वर्मा. पुन्हा एकदा मंगेश शिंदेसाठी. पाहूया वॉट कटर बॉल. काही समजू शकला नाही मंगेश. उत्कृष्ट पद्धतीची गोलंदाजी. वॉट कमबॅक बॉयज. वॉट शॉट. लेग साईडच्या दिशेने टोलवलेला चेंडू आणि 6 धावा. उत्तुंग मारलेला षटकार मंगेशच्या बॅटमधनं. आणि या ठिकाणी संघाची धावसंख्या झाली आहे 79 आफ्टर 6 ओव्हर. अजूनही जिंकण्यासाठी लागतात 24 बॉल 46 रन 46 धावा. मंगेश शिंदेची बॅट तळपते या ठिकाणी आणि थोडीशी टीम मीटिंग. व्हॉट कमबॅक. याआधी 2 ओव्हर मॅच थोडीशी फील्डिंग संघाकडे झुकलेली होती परंतु मतलब फटाक से यू. हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बांधलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है. सुनो. शुक्ला जी अरे कल आना, आज बैंक बंद है. आनंद दायमा उत्कृष्ट पद्धतीची बॅटिंग केली आहे त्याने. आता त्याच्या बॅटमधनं आतापर्यंत 17 बॉल 39 धावा, 5 चौके आणि 2 षटकार. त्याच बरोबरीचा नॉन स्ट्राईकला मंगेश शिंदे ज्याने 8 बॉल 22 धावा केल्याय 3 षटकार मारून. पाहूया आपल्या संघाला जिंकण्यासाठी हे काय योगदान देतात. वॉट यॉर्कर चेंडू. एक धाव पळून पूर्ण. उत्कृष्ट पद्धतीचा चेंडू लक्ष्मण वाघमोडे यांचा. पुन्हा मंगेश शिंदे लगातार. पुन्हा यॉर्कर पद्धती चेंडू. एक धाव पळून पूर्ण. दुसरीचा प्रयत्न परंतु नकार दिलाय आनंद मायाने. आनंद स्ट्राईक ठेवतोय स्वतःकडे. उत्कृष्ट चेंडू. 2 चेंडू 2 धावा. रिव्हर्स अटेम्प्ट परंतु पुन्हा परत नीट खेळण्याचा प्रयत्न केला.
उत्कृष्ट पद्धतीचे बॉलिंग करतात लक्ष्मण वाघमोडे. 3 बॉल 3 सिंगल. हात खोलण्याचा मौका देत नाहीये बॅट्समनला. पाहूया पुढचा चेंडू मंगेशाला. फुलटा चेंडू लेग साईड दिशेने आणि या मिळाल्या 6 धावा. उत्कृष्ट बॅटिंग मंगेशची बॅट तळपते. त्यांनी आतापर्यंत 10 बॉल मध्ये 4 षटकार मारलेले आहेत आणि 29 धावा बनवलेल्या आहेत. अजूनही जिंकण्यासाठी 20 बॉल 37 धावांची गरज. बॅट उत्कृष्ट चेंडू काही समजू शकला नाही मंगेश. डॉट चेंडू. $88 for 1. And the last 3 overs, 36 runs to win. 89 runs, my bad. The sun is beating down, but the VB11 are not going to be beaten. They need 36 in 18 balls. And very important over this. And it's Sahil who is going to take that responsibility of bowling the difficult over. Because if in this over they don't score maybe more than 10 runs, there is pressure on them. But if you make that 15 or more, then it's the bowling team who will be feeling the heat even more. Oh, what a start to the over. Beautiful ball, beautiful result for the bowling team. ADP Warriors will be so happy. Sahil getting his team that breakthrough, just as I was talking about. Very, very important over in the context of the game. And Mangesh, after playing a blistering knock, has to unfortunately walk back. "30 runs, just 12 balls, and has brought his team to a spot where they can believe they'll win it." And now walks onto the crease Sagar, jersey number 10. Just was commentating a little while ago. Now on the field, let's see if he gives me the chance to commentate and see some big shots. When he's wasting no time there, tries to slog it straight to the hands of the fielder. 35 of 16. Excellent delivery. You can see what the batter's trying to do there. Create some room for himself there. Was Anand, but Sahil doing the right thing, bowling it into his body. एक धाव होऊ शकली असती परंतु सागरने डिनाइड केले.
Bowling that heavy ball is Sahil, and it's not easy to execute it under pressure. Sahil making it look so. They need boundaries. Oh, and I said they need boundaries. That's a beautiful shot. Over extra cover for 6 runs. And the first bat ball from Sahil. Maybe wanting to change things up, keep it unpredictable for the batters. But Sagar knew exactly what to do for that delivery. हार्दिक पांड्या का वीकनेस हो सकता है आउटसाइड ऑफ, सागर का नहीं. Oh ho ho! Like a true bowler, a good comeback, and with that we come to the end of 8 overs. It's 98 for 2, and they need 27 runs to win of 12 deliveries. So just 9 coming off this over, and I said that they would need at least 15 runs to be happy. 27 of 12. And I would request the players to speed things up, please. We are already 1 hour ahead of schedule. And once again, I'd like to remind all the players that we are running 1 hour behind schedule. So would please request you to speed things up and not waste any time on the field. It's very necessary that we respect the time. Organizers' nightmare otherwise. And that's a dead ball. Missed his stepping. That's in the air. The bowler, the fielder, both running. Oh, that's a catch dropped. Oh, no, no, no. You don't want to drop Sagar. सागर के Oh, Anand goes big. Anand gets another life. 2 drops in 2 consecutive balls. Yes, it exactly looks like ADP Warriors have said that we don't want to win this easily. We want to make it tough for ourselves. I wonder how much more tougher they want to make it. $25 of 10. Oh! 3, make it 3 out of 3. This one, I would say, was maybe a little tougher, but you would expect such catches to be taken, especially at this point in the game. One more drop. So we've not seen a hat-trick of wickets, but we've seen a hat-trick of drops. Hat-trick promised है, किस चीज का वो नहीं.
Oh, Sagar goes once again. He goes big over extra cover. 6 more runs. And this is exactly why you do not drop players like Sagar. They will make you pay and pay heavily. It's now 17 runs needed of 8 balls. They've lost only 2 wickets, so you would assume that both these balls are free hits. You have the license to go big and go hard. Once again, that's full. Once again, over the offside. That's not a 6 this time. It's 4, but nonetheless, the boundaries are not stopping. The catches are dropping. And ADP Warriors are slouching, slopping in the field. Their shoulders are dropping a little bit. 13 runs in 7 balls. Oh, Sagar wants to go big once again, but this time all he could manage is the ball straight to Nipun. So last over, 12 runs needed. 3 drop chances. Looks like everyone wants to be Punjab, but they're forgetting that neither is Punjab on the top, nor are they winning, nor are they taking their catches. And after some respite from the sun, it's back from behind the clouds. And I would also ask the next 2 teams to please be ready. The next 2 teams would request your players to be ready to take the field after this over. And where's this ball going? The fielder is trying to save it. Oh, he does. And Sagar trying to run too. The throw was not that great. 10 of 5. Still anybody's game. Where's that going? That's going for 1 bounce and... oh no, that's 6. No bounce, straight out of the ground. 6 runs, just 4 more runs needed now. 1 shot away. Where's that ball going? Straight to the fielder. Three balls, 3 runs. And once again, I would request the teams of the next match to please be ready. That's in the air. That's a catch. He takes it this time. Ritik takes the catch, and could this be a late twist in the tail? Anand's played a beautiful knock. He scored 43 runs of just 23 balls.
He has guided his team right to the finish line. Just haven't been able to send them across. And once again, three runs of two deliveries. The new batter on strike is Vishal. At one point we thought it was the ADP Warriors game, then the VB11 made a comeback. Right until the end of the last over it looked like it's going to be theirs, but now we're still waiting to find out who's going to be the winner. 3 runs, 2 deliveries. And I'd request the teams to please speed it up because we're way above time. And the equation is now the last ball to go. They need 2 runs. Are we going to see a super over? But oh, he's doing it the Steve Smith way. Everyone remembers that game, Rajasthan. Oh my God. No team is going to win. The match is tied. ADP Warriors have rescued themselves. VB11 unfortunately unable to find the boundary. Unable to score 2 of 1. That's why we say that you don't know what's going to happen right until the last ball. किसने सोचा था कि आखिरी ओवर में जब 12 रन चाहिए थे तो ये होने वाला है. 3 बॉल में 3 रन चाहिए थे. So it is going to be a super over, the first super over of Super Kings Premier League Season 6. VB11 were cruising. The game was in their bag, in their hat, in their hands, you call it whatever. But it was stolen. Stolen from ADP Warriors.
and it's still out for anyone. 12 more deliveries to go, and only then will we know who wins. Hopefully. Oh my God, what a shot! पर VB11 के साथ सारे खिलाड़ी यही सोच रहे होंगे कि अगर ये पिछले ओवर में कर लिया होता तो ये करना नहीं पड़ता मैं फिर से. दो बॉल 12. Oh, that's also a delivery in the slot. But won't go for a 4. Unfortunately, they get 2 runs, yes. पिछली ओवर में 3 बॉल में 3 रन चाहिए थे और यहां पे 3 बॉल में 14 रन ऑलरेडी हो चुके हैं. और लगता है कि आनंद जो पिछले ओवर में नहीं कर पाए उसका पूरा गुस्सा निकाल रहे हैं और साहिल की किस्मत के उनके सामने आके उन्हें बॉलिंग करना पड़ रहा है. 20 रन आ चुके हैं केवल 4 गेंदों में. तो दबाव अब पूरी तरीके से एडीपी वॉरियर्स के बॉलर पर, एडीपी वॉरियर्स के सभी खिलाड़ियों पर. सुपर ओवर में 20 रन. अभी भी एक गेंद बचा है. 26 रन मार दिया है आनंद ने. 26 रन. और ये शॉट तो अगर आप देखेंगे उन्होंने पूरी सही तरीके से टाइम भी नहीं किया. मिस हिट, पर मिस हिट भी यहां पे 6 के लिए जाते हुए. इतनी ताकत. ओ, अपने कलाइयों का इस्तेमाल किया इस बार. 2 रन लेने की पूरी कोशिश. थ्रो. ओ, और क्या ये बेन स्टोक्स हैंड ऑफ द गॉड मोमेंट हो सकता है? जी नहीं.
तो एक ओवर, उस सुपर ओवर के बाद 29 रन बना लिए हैं VB11 ने। तो 30 रन का टारगेट है 6 गेंदों में। अगर बैंक, जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ AU। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बांधलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ AU. AU करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ॲपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. AU सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो, शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक, जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ AU। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बांधलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ AU. AU करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ॲपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. AU सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो, शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक, जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ AU। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI। Where is that going? Straight to Vishal, and Vishal drops it. तो लग रहा है दोनों टीम्स आपस में पासिंग द पार्सल खेल रहे हैं कि एक तेरा कैच ड्रॉप, एक मेरा कैच ड्रॉप. पांच बॉल में 25 रन. Oh, the first good delivery. This is going to give them a lot of confidence. This will put a lot of pressure also. 23 in 4 balls. Every ball needs to be a boundary.
Where's this one going? That's goal! Oh! And I think this is the most excited I've seen the crowd in the whole day. Beautiful delivery. And with that delivery, the win has all but been sealed for VB11. What another good delivery that is. So Anand has been a one-man show so far in this super over. Last ball. That's in the air. Mangesh is under it. No. Vishal did tries all, but he drops the catch. But they don't drop the match. It's the ADB Warriors who dropped this game. And VB11 register their first win of the tournament of the Super Kings Premier League 2026 Season 6. Congratulations to VB11, and I would request the teams who are playing next to quickly take the field. The bowling team to please come onto the field quickly and set your fielders, take your positions. I would also request the batting team to have their openers ready. क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो, शुक्ला जी अरे कल आना, आज बैंक बंद है। बैंक जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ एयू. AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय And I would also request the officials to quickly start the next game. ADP Warriors and VB11, I request you to join me for the post-match presentation quickly.
मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. AU एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 मनी. BB11 and ADP Warriors, I would विचार request बदल all आणि the बँक players ही. to join us for the post शुक्ला match जी. जी बंद presentation. है. सुनो. शुक्ला जी अरे कल अनाज बैंक बंद है. बैंक जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ. अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो. QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना. तो मैं तो बन गया ना चपरासी. नॉट बँकिंग विथ एयू. AU एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. मतलब फटाक से AU. हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी, तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये ADP मिळतात Warriors, अमेझिंग I बेनिफिट्स, would पेपरलेस request the बँकिंग players आणि to please हायर join us for इंटरेस्ट, the ते पण post-match दर महिन्याला. presentation. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी. जी बंद है. सुनो. शुक्ला जी अरे कल अनाज बैंक बंद है. बैंक जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ. अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो. And if the players are not here, I would request the captains to please ask all their players to assemble. VB11, VB11, VB11. बुला लो ना सबको, बुला लो ना. Okay, may I have both the teams forward, please? ADP Warriors and VB11. Yes, thank you so much, and I'd like both the captains to come. So, मैं सवाल नहीं पूछना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही रोमांचक गेम था दोनों कैप्टन से. तो जस्ट आपके थॉट्स लेना चाहूँगा क्योंकि एक पॉइंट पे ऐसा लगा था कि गेम आपके तरफ है, फिर ऐसा एक वक्त आया था कि जहाँ पे लगा था आपके तरफ है, पर एंड में फिर क्रिकेट के खेल ने जीत लिया, सुपर ओवर तक गया वो गेम. तो व्हाट वर योर थॉट्स जब गेम सुपर ओवर तक गया था? टोटल बहुत ही अच्छा था, बैटिंग बहुत ही अच्छी हुई थी. 120 अराउंड इज़ अ गुड स्कोर. बट सामने आनंद आयमा, मंगेश शिंदे, दे आर वेरी गुड बैटर्स. मीन्स दे क्लियर अगेंस्ट द विन एनी ग्राउंड ऑन अ गिवन डे. But Shripal, Shalva, Sahil, they bowled really well to keep us in the game. Just fielding here and there, and that match was to the super over. Again, super over में Sahil is a very good bowler. Just it was not his day for the super over. That's why. यस, क्रिकेट का खेल ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा नतीजा दे देती है. वो कैच, वो शायद वो जो बॉल था वो अगर फील्डर के हाथ में कैच आ जाता है, बाउंस नहीं होता. तो सागर आप बताइए कि क्या चल रहा था आपके दिमाग में जब आप क्रीज पर उतरे थे, व्हेन यू हैड टू फिनिश द गेम
And how did it feel that you couldn't finish? जब मैं गया तब तो इजी चेस था क्योंकि 18 बॉल 36 हो रहे थे, रन हवा भी थी. बट जब 4 बॉल 4 से हम टाई कर लिया हमने तो थोड़ा सा बुरा लगा. बट फिर हमको मालूम था कि सुपर ओवर में हमारे पास हिटर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आनंद आयमा ख़त्म कर दिया फर्स्ट 3-4 बॉल में गेम. तो वहीं पे गेम है एक्चुअली. नहीं तो सुपर ओवर के बाद हम थोड़ा सा ये हो गए थे क्योंकि हमारा मैच था 4 बॉल 4 में. वो ही आउट हुआ तभी गया और वही उसने पूरा ख़त्म कर दिया 4 बॉल में. तो वही उसी का गेम है पूरा. तो अभी क्या ही बोल सकते हैं उसको. Everybody has seen his game and everybody knows what he can do. Yes, and you spoke about Anand, so I would like to call Anand on stage, please, for the Fighter of the Match award. Fighter of the Match award goes to Anand. And the fighter of the match is Sahil Parekh, please. And like the captain said, a very good play. Unfortunately, not his day. Congratulations, VB11, on your first win in the tournament. Hard luck to the ADP Warriors.
आज के दिन का 5वां मैच एसडीएन कैपिटल एडवाइजर्स और केपीएनजी ब्लास्टर्स के बीच। ब्लास्टर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, एक्चुअली फील्डिंग करने का निर्णय लिया, और 2 ओवर के बाद उनके सामने वाली टीम एसडीएन कैपिटल्स का स्कोर 15 रन। और यहां पे एंड अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रास, बहुत सारे एक्स्ट्रास इस ओवर में। तो जब इतनी अच्छी शुरुआत करती है कोई भी बॉलिंग टीम, तो नहीं चाहेंगे कि एक्स्ट्रा से जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाए। ओ हो, ये वाले डिलीवरी को अंपायर ने कहा कि नॉट अ वाइड। बहुत करीबी था ये भी मामला। ओ हो, बहुत करीब था वो स्टंप से, बाउंड्री से तो बहुत दूर, स्टंप्स के बहुत करीब। That's in the air between both the fielders and good stop. Tag team effort in the deep results in 2 runs being saved. So good way to finish the over. 3 overs done. The score is 20 for the loss of 2. Despite the wides, this over only going for 6 runs. और हमने ये देखा है कि और यहाँ पे देखिए मिसफील्ड, बॉल उनसे दूर भागते हुए 1 का 2 बना दिया। मिसफील्ड, एक्स्ट्रास, तो पहले ओवर 2 ओवर्स में जो डिसिप्लिन था उसके बाद
थोड़ा लूज और लाइटली खेलते हुए यहाँ पे ब्लास्टर्स की टीम। जरूरी है कि धीरज रखना पड़ेगा उन्हें, पूरा ध्यान देना होगा उनको अपने छोटी छोटी चीजों पर। पिछले गेम में हमने देखा था कैसे एक ड्रॉप कैच या एक एक्स्ट्रा बॉल, एक एक्स्ट्रा रन, एक मिसफील्ड ने मैच का रूप बदल दिया था। ये अच्छा अपने फील्ड के मुताबिक बॉलिंग डालते हुए ओ ये देखिए, ये लंबा शॉट लगाया सौरभ ने। तो 6 बॉल लगाए उन्होंने अपना पहला छक्का मारने के लिए, पर एसडीएन उम्मीद करेंगे कि यहां से अभी वो जो सिक्सेस का सिलसिला है वो शुरू हो जाए। पहली बार शायद आप कह सकते हैं इस ओवर में एक डिलीवरी जो अप टू द मार्क नहीं। और यहां पे भी ये भी बॉल थी मारने वाली, बिल्कुल स्लॉट में लेग साइड की तरफ। फील्डर डीप में खड़े तो हैं, पर आप मानते हैं कि जब लेग साइड की तरफ पड़ती है बैट स्विंग से बॉल ऊपर ही जाता है। तो 4 ओवर के बाद स्कोर एसडीएन कैपिटल एडवाइजर्स का 30 रन। और यहाँ पे शिंदे हाई स्कूल के ग्राउंड पर अब कंडीशंस जो है बेहतर होते हुए बैटर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए मैं कहूंगा, सिर्फ बैटर्स के लिए नहीं। सूरज की किरणें अब बादलों के पीछे छुप चुके हैं। और दैट्स जी हाँ, यहाँ पे एक और वाइड। और मैं इसी की बात कर रहा था कि यहाँ पे कंट्रोल की जरूरत है, तो कंट्रोल अपने लाइन और लेंथ अपने एक्स्ट्रास पर भी करना होगा। तेजस गेंदबाज और ये गेंद घूम के डाली उन्होंने। इस गेंद को मारना बहुत मुश्किल, पड़कर घूमी है बाहर की तरफ। और यहां पे देखिए, मैं कह ही रहा था कि थोड़ी डिसिप्लिन की जरूरत है। यहां पे डिसिप्लिन लाइन, डिसिप्लिन लेंथ
बाउंड्रीज खोज रहे थे, बाउंड्रीज आ नहीं रही थी इतनी फ्रीली, और उस बाउंड्री की खोज में यहां पे अपना तीसरा विकेट खोते हुए SDN कैपिटल। 32 रन, 3 विकेट, 26 गेंदें, 4.2 ओवर्स। और मैं ऑफिशियल से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नए बल्लेबाज आए हैं या आएंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी पिच पर आइए और क्रीज पर पोजीशन ले लीजिए अपना, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। अच्छा शॉट लगाया वहां पे नए बल्लेबाज गौरव शाह ने, और ये उतना ही अच्छा थ्रो डीप से। और गौरव अपना डेब्यू कर रहे हैं SPL में इसी साल। उस टूर्नामेंट में पहली बार आते हुए, तो देखते हैं कि अपने डेब्यू टूर्नामेंट में क्या कमाल करते हैं, क्योंकि उनकी टीम को जरूरत है यहाँ पे एक अच्छी पारी की, एक लंबे पारी की। ओ, और यहां पे देखिए अपने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया इस बार, अपने टाइमिंग का इस्तेमाल किया। तो तेजस का ये ओवर बहुत टॉपसी टर्वी रहा है। पहले वाइड से शुरुआत किया, फिर एक विकेट मिला, पर यहां पे एक चौका भी आते हुए। मिक्स्ड बैग। ओ, ये लिफ्ट देखिए, टेनिस बॉल का बाउंस, गुड लेंथ से भी ये ऊपर उछल के ऐसा फीलिंग देता है कि आप शायद पर्थ पर्थ पे खड़े हो और पर्थ के पिच पर खेल रहे हो। पर ऐसा भी हो सकता है कि अगली डिलीवरी पर ये इनवेरिएबल बाउंस जो है बैटर के बैट के नीचे से निकल जाए। That's बस एक अपील, अच्छी गेंद ये पड़कर फिर से बाहर घूमी, पर बैटर का एज ले नहीं पाई, और इसी के साथ ओवर खत्म। यहां पे 5 ओवर के बाद 39 स्कोर, 39 for 3। तेजस बंसल ने अपने 2 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट लिए। शानदार स्पेल, अपनी टीम को एक मजबूत पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। ये देखिए, पिछले ओवर में शायद वो लेंथ से या शायद थोड़ा सा पीछे से बॉल उछल के आई थी, और ये देखिए उसी सेम लेंथ से अभी नीचे जाते हुए बैटर के। फिर से अच्छी गेंद, एज, बैकवर्ड पॉइंट, सर्किल के अंदर सीधा हाथों में, एक ही रन।
कभी कभी साथ देता है, कभी कभी मात देता है। ये ऐसा खेल है, ये शायद उनके हाथों में जाता तो एक सुनहरा सुनहरा मौका था यहाँ पे एसडीएन कैपिटल को शायद बोल्ड आउट करने का। और ये बिल्कुल स्लॉट में गेंद पर सीधा फील्डर के पास, निराश होंगे बल्लेबाज के। इस गेंद पर केवल एक ही रन लिखा है, 4 नहीं। और ऐसा लग रहा है मानो और अच्छी अटेम्प्ट थी वहां पे। और यहां पे देखिए फील्डर चार्ज कर रहे थे, फील्डर चार्ज कर रहे थे और चार्ज करते करते बॉल को अपने पीछे छोड़ दिया, खुद ही आगे निकल गए। उसका नतीजा मिसफील्ड, 1 रन। और ये गेंद एक बाउंस और 4 रन। तो ओवर के आखिरी गेंद पर एक बाउंड्री आते हुए पर तब भी सिर्फ 9 रन। (48) 6 ओवर के बाद केवल 4 ओवर बाकी है और ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेट कर रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज और अब खुलेंगे, अब बड़े शॉट्स लगाएंगे। क्योंकि या फिर शायद वो ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास विकेट्स इन हैंड ज्यादा तो नहीं है, तो शायद अगले ओवर से अनलीश करे, इस ओवर को प्ले आउट करे। और ये अच्छी शुरुआत 7वीं ओवर की। और ये देखिए, मैं अच्छी शुरुआत की बात करते करते दूसरी गेंद पर वाइड। अगर एक्स्ट्रास की तरफ अगर नजर डालता हूं मैं दोस्तों, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जी। तो एक्स्ट्रास 8 और ये इन दी एयर, फील्डर के पीछे गेंद। फील्डर ने बॉल के बाउंस को एंटिसिपेट किया ही नहीं, पर वहां पे एंटिसिपेशन बहुत सही। क्रिकेट पिच पर फुटबॉल के स्किल्स दिखाते हुए अपने वहां पे फील्डर 2 रन बचा लिए। और देखिए यहां पे कि बॉलर अच्छी बॉल डालता है, बैटर को चकमा देता है, बॉल एज खाता है, तब भी बैटर को 2 रन मिलते हैं। ये गेम बॉलर्स के लिए आसान है ही नहीं। और ये स्लोअर वन सीधा हाथों में कीपर के, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा नतीजा, स्लोअर डिलीवरी, बैक ऑफ द हैंड था लगता है ये। सौरभ सोनी बड़ा शॉट, लंबा शॉट लगाने के प्रयास में सिर्फ एक एज निकालते हुए सीधा कीपर के हाथों में। एक और विकेट, 4 विकेट डाउन एसडीएन कैपिटल एडवाइजर्स।
और उनके पहले मैच में जो उन्होंने वो मैच जीता था, जिन्होंने मैच जिताया उन्होंने वो पवेलियन लौट रहे हैं। 52 पे 4। और ये स्लोअर वन सीधा सीधा फील्डर के हाथों में। तो क्या कमाल का ओवर डाला है यहां पे आशीष ने। तो 53 फॉर 4 से अब हो चुका है 53 फॉर 5। आशीष भाई अपना पूरा कमाल दिखाते हुए शिंदे स्कूल के सुनहरे ग्राउंड पर। प्रवीण को पवेलियन लौटना पड़ेगा डक पे, और अगले प्लेयर अमित बल्लोटा। आखिरी बॉल इस ओवर का, क्या एक और विकेट निकालेंगे आशीष भाई? और यहां पे देखिए स्मार्टली सिंगल के लिए टैप कर दिया ऑफसाइड की तरफ, पर शानदार ओवर, 6 रन 2 विकेट। तो 7 ओवर के बाद 54 फॉर 5, सॉरी, आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। और वहां पे इशारा हमारे अंपायर का बैटिंग पावर प्ले, पर बैटिंग पावर प्ले गलत समय पर आते हुए बैटिंग टीम के लिए। क्यों? क्योंकि 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर हैं। तो बॉल 1 से मारना घर में बैठे टीवी देखते हुए बहुत आसान लगता है, पर जब आप ग्राउंड पर होते हैं, उस परिस्थिति में होते हैं, तो वहां से आपको मारना, एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है। और अब दबाव भी है कि एक टारगेट सेट करना है इन्हें। और ये बैटिंग पावर प्ले के पहले बॉल पर विकेट। तो बॉल हवा में जा तो रही है, पर बॉल ज्यादा दूर नहीं जा रही है, सीधा फील्डर के हाथों में। छठा विकेट खोते हुए अपना एसडीएन कैपिटल एडवाइजर्स।
कौन कहेगा कि ये बैटिंग पावर प्ले है? पहला रन इस बैटिंग पावर प्ले के ओवर में चौथी गेंद पर आते हुए, चौथी गेंद पर 55 पहुंचा है स्कोर 6 विकेट पे। और ये देखिए लंबे समय के बाद एक बड़ा शॉट। और लगता है कि उस एक बाउंड्री ने हाथ खोल दिए हैं और जो भी दिमाग में ब्लॉक्स थे वो भी खोल दिए हैं। करारा शॉट लगाया लेग साइड की तरफ। 67 पर पहुंच चुका है स्कोर, आखिरी के 10 बॉल बाकी। आखिरी के 9 बॉल। कमाल का फील्डिंग अपने बॉलर को सपोर्ट देते हुए, और वहां पे अपने कीपर को वो फील्डर ने भी सपोर्ट दिया। और 69 पर खत्म करेंगे 9वां ओवर। 10वां ओवर अभी भी बाकी। 69 रन्स, आखिरी के 6 बॉल। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगले टीम के दोनों कप्तान से रेडी रहने के लिए, आपके टॉस के लिए।
और ये 69 रन में से 8 एक्स्ट्रास के हैं, तो आप अगर वो 69 को, अगर वो एक्स्ट्रास को आप निकाल दो तो 60 के आसपास का टोटल है इनका। और ये देखिए अपने ट्रम्प कार्ड को लगता है आखिरी ओवर के लिए बचा के रख रहे थे। काफी डिसेप्टिव बॉलर है ये डिलीवरी भी ऐसा लग रहा था कि पेस ऑन होगी, पर पढ़ के डिसेप्टिव पेस पर आई। और पूरी तरीके से अभी दबाव बैटर पर, 2 बॉल कोई रन नहीं। और वहां पे डगआउट से नारे आ रहे थे बाहर है, पर बाहर तो सिर्फ उनके खिलाड़ी को जाना पड़ेगा इस वक्त। Oh, is that a wicket? Yes, that's a wicket. Back to back. और यहाँ पे देखिए मिसफील्ड हुआ है, तो 2 रन मिलेंगे। आखिरी बॉल अब। आखिरी बॉल। स्कोर 70 पार कर चुका है। और ये एक और कैच, जी नहीं, कैच तो होगा नहीं। फील्डर देखते हैं बाउंड्री रोकेंगे या नहीं। बिल्कुल रोकेंगे। यहां पे 3 रन लेने की कोशिश। और बस रुका हूं मैं कि कंफर्मेशन जी 74 आफ्टर 10 ओवर्स है एसडीएन कैपिटल एडवाइजर्स का स्कोर। तो जीत के लिए उन्हें 74 के नीचे रोकना होगा ब्लास्टर्स को अगर जीतना है तो केवल 75 मारने हैं। देखते हैं कि क्या ये केवल ही रहेंगे इनके लिए या मुश्किल है। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी।
जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचं तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है. सुनो. शुक्ला जी. अरे कल अनाज बैंक बंद है. बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ. अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो. QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना. तो मैं तो बन गया ना चपरासी. नॉट बैंकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. मतलब फटाक से एयू. हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचं तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है. सुनो. शुक्ला जी. अरे कल अनाज बैंक बंद है. बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ. अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो. QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना. तो मैं तो बन गया ना चपरासी. नॉट बैंकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. मतलब फटाक से एयू. हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचं तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है. सुनो. शुक्ला जी. अरे कल अनाज बैंक बंद है. बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम. Good bowling by Praveen. Praveen Nallavade. Hello. Good start by Praveen Nallavade. जिधर फील्डर था उधर ही मारूंगा बोले.
प्रथमेश बैटिंग सब है अपनी टीम के लिए. अजीत टेंशन में, महेश भाऊ खुश क्योंकि अजीत टेंशन में है. इनसाइड एज. सेंसिबल क्रिकेट बाय नागराज भाऊ. रिजवान अपील बाय सोनी. अकोला जाके आए हैं तब से ऐसे ही हो गए. सौरभ सोनी, हमारे सबके चहीते सौरभ सोनी. रिवर्स, व्हाट अ शॉट. प्रवीण के पेस पर रिवर्स 4. क्वालिटी बैटिंग, क्वालिटी. There are no other words to describe this. इनिंग की दूसरी ओवर लेकर आते हुए अभिजीत गौड़ी, जो कल तक गौरव को पता नहीं थे. वाइस कैप्टन गौरव. यहां पर बेहतरीन शॉट. 6 रन. व्हाट अ शॉट. वाइड बॉल को सामने छक्का मार दिया है. It won't be long if he sticks around. He's trying to save the time of the committee. What a shot. नागराज भाऊ पिछली मैच में काम खत्म करे बिना आ गए थे, आज पूरा खत्म करके जाएंगे. 74 की मैच में ओपन आ गए हैं नागराज भाऊ. शॉट के कैच ड्रॉप. ये कैच ड्रॉप है कि मैच ड्रॉप है, ये देखना पड़ेगा. अच्छी चेंज थी, लेंथ में अच्छा बदलाव था. अगेन अ चेंज इन द फील्ड. मिड विकेट एंड लॉन्ग ऑन गोज बैक एंड ऑफ साइड. Every fielder on the offside is inside the circle. और ये what a shot by Prathamesh. Just timing it for a 4. Like Mahesh Bhau. Times everything.
और ये मैं कहूँगा थोड़ी खराब बॉलिंग. शॉर्ट बॉल आउटसाइड द ऑफ विदाउट एनी प्रोटेक्शन. Power play bowling is very difficult here. सेकेंड ओवर इस इनिंग्स का और अपने स्पेल का लेकर आते हुए प्रवीण, क्योंकि वो जानते हैं अभी विकेट मिलेंगी तो ही बच पाएंगे, और नागराज बाबू भी जानते हैं कि अगर ओवर मेडन भी गई तो भी ये इजी चेस है. स्लोअर बॉल, एक रन के लिए ढकलते हुए प्रथमेश. बैकअप की मांग करते हुए अमित सर. 47 runs in 46 required. It's a funny game cricket. This team hit 140 runs in the morning. What a slower ball. Inspired by Jayesh Rajpal. What a shot. What a shot. पेस का पूरा इस्तेमाल करते हुए नागराज बाबू.
पिछले मैच का जलवा अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है कि नागराज बाबू ने अगले मैच का जलवा शुरू कर दिया। Umpire was not active here. Umpire sir, स्प्रे पाठव का? नागराज भाऊ ऑन फायर. नागराज भाऊ.
और ये शॉट डाउन द ग्राउंड लगाया पर केवल एक ही रन मिलेगा। तो स्कोर केवीएनजी ब्लास्टर्स का 54 हो चुका है। इक्वेशन अभी है 21 नीडेड ऑफ 33 डिलीवरीज। रिक्वेस्ट करेंगे हम ऑफिशियल्स और सभी खिलाड़ियों से कि आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करिए, हम ऑलरेडी एक मैच पीछे चल रहे हैं। और ये इनसाइड एज स्टंप्स पर नहीं लगी। और यहां पे अक्रॉस ऑफ स्टंप के तरफ आके हुए शफल तो किया पर मारा भी ऑफ साइड के तरफ पर ही। एक ही रन फिर से। और ये भी फुल टॉस, और फुल टॉस पर एक ही रन, एक भी रन नहीं। तो 5 ओवर के बाद स्कोर 55 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इक्वेशन अब है आखिरी 30 बॉलों में 20 रन। यार अच्छा शॉट यहाँ पे पर फिर से फील्डर, और वो चाहेंगे ब्लास्टर्स की टीम के जो अपना टोटल है वो जल्दी चेस करे क्योंकि उनके एनआरआर पर भी वो अफेक्ट पड़ेगा। और अगर उन्होंने जल्दी खत्म किया तो मैं मानता हूं कि उनसे ज्यादा खुश हमारे कमेटी के मेंबर्स रहेंगे। This match has taken a long time to end. It was expected out of Nagaraj Baut that he will end it in 5 overs. और यहाँ पर कैच प्रतीक पाटिल।
नेक्स्ट मैच जल्दी चालू करनी है। एमएसडी अपने फील्डर्स रेडी रखिए, आपका कैप्टन इधर उधर घूम रहा है। आकाश कोयले लेकर आते हुए अपने इनिंग की दूसरी ओवर। पावर प्ले ओवर और चाहिए 24 बॉल्स में 17 रन्स। कटर बॉलर कोयले शेन वॉन से प्रेरित अगले मैच के कीपर महेश भाई गुड़े बाहू रेडी। शॉट आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। और यहां पर अच्छा अटेम्प्ट कैच का, क्राउड कैच। और ये मैच जितनी इन्होंने पहली अच्छी जीती थी उतनी ही ये खराब हार रहे हैं। बॉल और ये विकेट, अच्छा कटर बॉल। बीबीटी का अच्छा ट्राई।
टाइम वेस्ट मत करिए प्लीज। कमेटी की तरफ से आदेश आया है इस मैच को जल्दी खत्म करने के लिए। वी हैव टू गिव द ग्राउंड बैक। प्रतीक लेकर आते हुए अपने स्पेल की दूसरी ओवर। प्रतीक पाटिल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हर मैच में इंपॉर्टेंट विकेट्स ले रहे हैं प्रतीक पाटिल। स्ट्राइक पर जयेश जाजू। 10 रन चाहिए, 6 रन आए। 17 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। बीबीटी कैन फिनिश इट इन 1 बॉल, 2 balls। ऑफ साइड की फील्ड बदलते हुए बीबीटी शॉट। स्लोअर गेंद, बहुत ही अच्छी स्लोअर गेंद। 2 हो सकते हैं और ये 2 हो गए। अच्छी फील्डिंग है बट 2 को नहीं रोक पाएंगे। एंड ऑफ द मैच। प्लीज फील्ड जल्दी सेट करिए। अजीत परियार। कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बांधलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री यूपीआय क्यूआर, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला जी. हाँ जी बंद है. सुनो शुक्ला जी. अरे कल अनाज बैंक बंद है. बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ. अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो. क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना. तो मैं तो बन गया ना चपरासी. नॉट बैंकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. मतलब फटाक से एयू. हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बांधलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री यूपीआय क्यूआर, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी. जी बंद है. सुनो शुक्ला जी.
अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ AU। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ AU. AU करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. AU सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो, शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ AU। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ AU. AU करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. AU सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो, शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ AU। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ AU. AU करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. AU सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो, शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ AU। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ AU. AU करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. AU सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो, शुक्ला जी,
अरे कल आना, आज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ एयू। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी, तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बांधलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. AU करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. पहली ओवर लेकर आते हुए दिवेश दवे. रोटेट करते हुए स्ट्राइक, सम्यक. बोरा को स्ट्राइक देते हुए सम्यक. Quality shot by Yash Bora. Yash Bora could have taken the strike. सम्यक अच्छा कर रहे हैं, बॉल वेस्ट नहीं जाने दे रहे हैं सम्यक. और ये अच्छी कैच, एक्सेप्शनल कैच बाय ओनली कीपर महेश भाऊ.
सौरभ सोनी कमेंट्री बॉक्स में आइए। Good start by Kiran Gargote. अच्छी गेंद। After 2 overs, 18 runs with 1 wicket. और हमारे थाला महेश बाईगुड़े। वरती हाइट। इट्स अ न्यू रिकॉर्ड बाय महेश बाईगुड़े। सबसे जल्दी ओवर स्टार्ट करने का रिकॉर्ड। टू क्विक।
अच्छी गेंद, 1 रन के लिए ढकल दिया है। थोड़ा फंबल हुआ था दिवेश से, बट 2 रन नहीं हो पाए। Excellent shot by Tanmay. 6 runs. Out of the park. Too far. तन्मय पाटिल की टैगलाइन है एक, हट। और ये स्टंप के ऊपर से जस्ट बचे। Excellent shot by Tanmay. Very good shot. Very good shot for 4 runs. गैप में ढकल दिया। स्कोर एसएन योद्धास का 35 एट द एंड ऑफ 3 ओवर्स, और इस गेंद के बाद उनका स्कोर 37 आफ्टर 3.1। टॉस जीतकर हमने देखा है कि ज्यादातर टीम्स ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, पर एसएन योद्धास, नाम में योद्धास है तो कुछ अलग करके दिखाने का जज्बा। बैटिंग फर्स्ट लिया, ये गैप में डालने की कोशिश, फील्डर ने अपने हाथों से उसे रोक दिया। केवल 1 रन। और ये गेंद हवा में है, फील्डर उसके नीचे, बिल्कुल कैच आसानी से पकड़ लिया। और उस कैच को आसान बनाया। वहां पे आसान नहीं होते ऐसे कैचेस, हवा में जब जाते हैं ऊपर, तो हवा भी चल रही है यहाँ पे, तो उसके वजह से भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर यहाँ पे दूसरी सफलता मिलते हुए
स्कोर 38 फॉर 2, 3.3 ओवर्स के बाद। और अगले बल्लेबाज जो आए हैं क्रीज पर, दर्शन बाहेती। पूरी क्षमता रखते हैं ये कि अकेले मैं कह ही रहा था कि क्षमता रखते हैं पूरी कि अपने अपने स्किल के ऊपर ही गेम को पलट सकते हैं। और बहुत अच्छी शुरुआत तो अथर्व सुरते देते हुए अपने टीम को अपने स्पेल से 4 गेंदों में केवल 3 रन और 1 विकेट। ओवर इस बार नहीं, इस बार फुल टॉस पड़ के कोशिश तो अच्छी थी, शॉट भी अच्छी थी। पर नतीजा केवल 1 रन। तो सम्यक पारख क्रीज पर मौजूद दर्शन बाहेती के साथ चौथे ओवर की ये आखिरी गेंद। और ये अच्छा शॉट लगाया, डाउन द ग्राउंड ही लगाया है। तो 4 ओवर के बाद स्कोर 40 रन 2 विकेट पे। दिवेश दावे अपना दूसरा ओवर डालते हुए 1 विकेट ले लिया उन्होंने, 14 रन पर दे दिए हैं उन्होंने। तो चाहेंगे कि इसे क्लोज आउट करे, ज्यादा से ज्यादा रन्स ना देकर। और ये अच्छी बॉलिंग, दर्शन जैसे बल्लेबाज को चकमा देना, उनको चुप रखना।
इतना आसान नहीं, और अगर वो आसान बना रहे हैं क्योंकि अच्छे डिलीवरीज डाल रहे हैं वो। और दर्शन ने कहा बहुत हो चुका इंतजार। लंबा शॉट लगाया लेग साइड की तरफ 6 रनों के लिए उनका पहला ये लंबा शॉट, बड़ा शॉट। और एसएन योद्धास उम्मीद कर रहे होंगे कि उनके जो कप्तान हैं ऐसे ही बड़े और लंबे शॉट्स लगाएं। पांच ओवर के बाद एसएन योद्धास का स्कोर 52 फॉर 2। तो नेट टू नेट आप कह सकते हैं रन रेट उनका 10 के थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। और फिर से आए हैं गेंदबाजी करने अथर्व। और यहां पे एक और लंबा छक्का आते हुए तो लगता है दर्शन ने डिसाइड कर लिया है कि वक्त आ चुका है अपने हाथ खोलने का, अपने एनर्जी को अनलीश करने का, अपने आप को अनलीश करने का। और वो डायलॉग हम सभी जानते हैं सलमान खान का कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। और लगता है कि ऐसा ही कुछ ठान लिया है दर्शन ने कि वो अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है अटैक करने का समय आ चुका है। रुकेंगे नहीं, ऐसी उम्मीद करते रहेंगे उनके सभी खिलाड़ी एसएन योद्धास के। देखते हैं क्या रोक पाएंगे उनको। और एक देखिए वहां पे चीकी शॉट लगाने की कोशिश, नतीजा सिर्फ एक डॉट बॉल। एंड ये इसी के लिए तो लाया था टर्बो को फिर से। जब एक बॉलर अच्छे फॉर्म में होता है, एक अच्छे स्पेल के बीच में होता है, तो आप चाहते हैं कि उन्हें सबसे अच्छे खिलाड़ी सामने वाली टीम के खिलाफ आप लगाएं। और देखिए अथर्व ने एक और विकेट लिया। पहले ओवर में भी उन्होंने ऐसे ही विकेट लिया, अपने टीम को थोड़ा वापसी कराया। यहां पे दर्शन का विकेट लेके टोटल में आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा अंतर हो सकता है।
मैं अभी कह ही रहा था कि उन्हें कौन रोक पाएगा, और या वो रोक पाएंगे। अथर्व ने कहा जी बिल्कुल रोक पाऊंगा मैं। तो पहले बॉल पर अपने ओवर में अथर्व ने एक 6 कंसीड किया था, उसके बाद एक शानदार कमबैक, उसके बाद उनके ओवर का स्कोरबोर्ड 0 विकेट, वाइड, सिंगल सिंगल। और ये अच्छी डिलीवरी, स्लोअर वन डाली, तो अपना ओवर, अपना स्पेल खत्म करेंगे। 2 ओवर 2 विकेट और सिर्फ 15 रन पर अथर्व सुरते। सिक्सटी टू फॉर 3 6 ओवर के बाद। और यहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग, यहां पे निराशा। और लगता है कि ये कारमा भी है। और हेलो हेलो, क्वालिटी बैट्समैन राइटी निकलस पूरन, ओनली व्हाट्सएप प्लेयर। वहां पे आईपीएल में निकी पू, यहाँ पे हमारा माल पागू।
सॉरी सॉरी, मालपू बोलना था, सॉरी। एक्सीलेंट रनिंग बाय मालपा एंड नॉन स्ट्राइक पर सम्यक बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। हमारे प्रिय मालपानी, सम्यक ने एक एंड पकड़ के रखा है, बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं सम्यक। हमारे मालपानी जी स्ट्राइक पर आए हैं। मैं चाहूंगा कि मालपानी एटलीस्ट कूल 30 करे तो उनका एक डिनर कम हो। बहुत ही अच्छे प्लेयर है, अपने पोटेंशियल पे अभी तक खेल नहीं पाए। मैं चाहूंगा कि परफॉर्मेंस करे अपनी टीम के लिए। शॉट, अच्छा शॉट था, बट एक ही रन मिल पाएगा। बॉल गेंद बना ली थी, शॉर्ट गेंद। वाइड बॉल, अच्छी ओवर डाली अथर्व बेट ने। अगली ओवर लेकर आते हुए किरण गारगोटे, अथर्व बेट।
Malpani on strike. This will be a great battle. Power play over. सात ओवर के बाद स्कोर 69 फॉर 5। एक्सेलेंट डिलीवरी और एसएन योद्धास ने टॉस जीतने के बाद बैटिंग फर्स्ट का निर्णय लिया था। क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था अपने बैटिंग के ऊपर। और कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर ओपिनियन या पॉपुलर बिलीफ इस टूर्नामेंट में अब तक उन्होंने कुछ हटके करने का सोचा। और यहां पे नतीजा उस निर्णय का आपके सामने 72 फॉर 5 7.4 ओवर्स के बाद। और ये शानदार गेंद के साथ किरण गरगोटे ने खत्म किया अपने स्पेल को। केवल 8 रन दिए हैं 2 ओवर में और 1 विकेट लिया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों टीम से कि बिल्कुल आप वक्त जाया ना करिए। ऑफिशियल्स के मैं अंपायर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लेयर्स को पुश करने के लिए कि वो जल्दी से जल्दी शुरू करे गेम को। आठ ओवर के बाद स्कोर 72 फॉर 5। तो बैटिंग फर्स्ट ले तो लिया है पर अभी तक वो बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए।
वो चाहेंगे कि थ्री थ्री डिजिट्स का फिगर तो टच करे। आखिरी 2 ओवर। और ये सिंगल। और ये डिलीवरी भी अच्छी, बैटर के रीच से बहुत दूर अपने फील्ड के मुताबिक डालते हुए। अगर मैं देखूंगा फील्ड में तो डीप में लेग साइड की तरफ एक, 2 और 3 खिलाड़ी। $85 for 5 after 9 overs. तेरह रन आते हुए इस ओवर में तो थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। और एमएसडी स्ट्राइकर्स चाहेंगे कि एंड का जो स्ट्राइक है 6 बॉलों का वो अच्छा रहे उनके लिए। कौन आ रहा है बॉलिंग करने आखिरी उन 6 बॉलों के लिए? रंजीत। और देखना होगा कि कौन से साइड से डाल रहे हैं। राइट आर्म अराउंड द विकेट। 6 बॉल्स टू गो इस इनिंग्स में। ये स्वॉटेड डाउन द ग्राउंड मिड विकेट की तरफ। ओ बॉल बाउंड्री की तरफ जा सकती थी पर किस्मत ने साथ दिया उनका। एक ही रन।
अच्छा शॉट, पर उस शॉट के लिए भी फील्ड सेट है बराबर से। और क्या पावरफुल थ्रो यश का। ओ, अंपायर ने कहा कि ये बॉल बाहर नहीं, ट्रैम लाइन के अंदर ही है। और यही एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पे रंजीत। और बैटर्स को हमेशा लगता है कि बॉल अगर उन्होंने छोड़ दिया तो वो वाइड ही है। और ये कमाल का ओवर है अब तक रंजीत द्वारा। केवल 4 रन आए हैं 4 गेंदों में। आखिरी 2 बॉल, अभी भी वो मैजिक 3 फिगर्स की ओर बढ़ सकते हैं। 2 छक्के की जरूरत। ओ हो, कमाल का ये डिलीवरी। इस बार स्टंप्स के ऊपर से डाला गेंद को। पिछले गेंद थोड़े वाइड थे। और ये गेंद हवा में, तो लगता है कि ये आखिरी ओवर बिना किसी बाउंड्री के खत्म होने वाला है। और यहां पे समाप्त होता है एसएन योद्धास। आपकी पारी 91। एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला। मनी 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 एव्हरी मंथ। विचार बदल आणि बँकही। शुक्ला हाँ जी बंद है। सुनो शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ एयू। AU एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री यूपीआय क्यूआर, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी बंद है. सुनो शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है. बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ. अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो. क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना. तो मैं तो बन गया ना चपरासी. नॉट बैंकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. मतलब फटाक से AU. हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. AU.
एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ॲपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो. शुक्ला जी, अरे कल आना, आज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ एयू. AU? एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. मतलब फटाक से AU. हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी, तेव्हापासून बँकेचं तर काम करतोय. घ्या बांधलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ॲपने बँकेची सगळी कामे. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑफिशियल से, अंपायर से, कि प्लेयर्स को बोल दे कि जल्द से जल्द शुरू कर दे. ऑलरेडी 5:15 हो चुके हैं, 5:15 बज चुके हैं. 10 ओवर की एक पूरी पारी अभी भी बची हुई है. SN योद्धास ने 92 रन्स का टारगेट दिया है. 92 बैटिंग पहला करके. एक और बार फिर से मैं ऑफिशियल्स को बोलूंगा कि प्लेयर्स को आप बोलिए कि वक्त हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं. वी वर सपोज टू फिनिश एट 4:30 एंड वी आर स्टार्टिंग द लास्ट इनिंग्स एट 5:15.
पिछले मैच में भी हमने एक लो स्कोरिंग थ्रिलर देखा था, यहाँ पे इतना हाई स्कोरिंग नहीं है ये गेम। तो क्या लगता है आपको कि क्या होगा नतीजा? 89 in 57 balls is the equation. First 3 balls have resulted in just 3 runs. और पहले ओवर के बाद एमएसडी स्ट्राइकर्स का स्कोर 6 रन। in 54। अथर्व और अजीत दोनों बल्लेबाज हैं जिनको ओपनिंग करने की जिम्मेदारी दी है। और अब बॉलिंग क्रीज पर आ रहे हैं एसएन योद्धास के कैप्टन योद्धा। और अपनी फील्ड प्लेसिंग्स को लेकर बहुत पर्टिकुलर होते हैं दर्शन। 1 इंच इधर या उधर भी वो टॉलरेट नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए किसी गेंदबाज को। Oh, that was really close. एज लगा था, मुझे लगता है कि बॉल पर उस एज के वजह से उसका मोमेंटम छिन गया। कीपर के पास जाते जाते बॉल डिप करके उनके ग्लव्स से दूर, ड्रॉप्ड कैच, चांस मिसिंग। और जब आपके पास बड़ा स्कोर नहीं, लंबा स्कोर नहीं, तो ये हाफ चांसेस को भी आपको कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। किस्मत का भी साथ होता है ऐसे गेम्स में। और मैंने शायद पिछले कोई मैच में कहा था कि एक बार ना वो जो कैच ड्रॉप करने का
जो बग है वो एक बीमारी जैसा होता है कि वो बीमारी फैलती है, पूरी टीम में फैलती है। जैसे कि आप कहते हैं कि जब कोई बहुत ही शानदार कैच लेता है तो जो एनर्जी है वो सब पे रब ऑफ होती है, तो उसी तरीके से जो कैच ड्रॉप करने के बाद जो एनर्जी होती है वो भी प्लेयर्स पर जाती है, रिफ्लेक्ट करती है यहाँ पे परिवर्तन फील्ड में। और ये बड़ा स्विंग लगाया है, वहां पे फील्डर मौजूद और कर लिया ये कैच। तो ज्यादा देर तक वो बीमारी फैली नहीं, 2 बार हुआ पर तीसरी बार नहीं। तो इस रन चेज में अपना पहला विकेट खोया है एमएसडी स्ट्राइकर्स ने। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नए बल्लेबाज क्रीज पर आएंगे कि वो थोड़ा भागकर क्रीज की तरफ जाएंगे क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। मैं ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करूंगा कि नए बल्लेबाज को थोड़ा पुश कीजिएगा जब वो फील्ड पे आएंगे। और ये छोटी गेंद पर फील्ड प्लेसमेंट देखिए, बिल्कुल सीधा फील्डर के हाथों में। Oh, that's a really good take by the keeper. बॉल शायद से थोड़ी लो रही थी, वो पिच का असर भी है कि पूरे दिन से यूज हो रहा है ये पिच। और ये फिर से ऑफसाइड की तरफ छोटी गेंद, पर वहां पे फील्डर बिल्कुल मानो कि उनके हाथों में सुपर ग्लू लगा है क्योंकि बॉल सिर्फ उनके हाथ में ही आ रही है डायरेक्टली। अंडर एज, और अंडर एज का नतीजा सिर्फ 1 रन। तो बहुत अच्छी ओवर डालते हुए यहाँ पे जयेश राजपाल जी। 5 गेंद हो चुकी है, केवल 4 रन आए हैं और पहले 3 ओवर में रन्स बिल्कुल कम।
और ये क्या गैप में जाएगी गेंद, बिल्कुल ये पहला बाउंड्री है इस पारी का। तो आखिरी बॉल ओवर के स्कोर पहुंचता है उनका 16 रन पर। और मैं बस कहने ही वाला था इस डिलीवरी के बाद कि अब तक कोई बाउंड्री नहीं आई है, तो मानो कि अजीत ने मेरे ख्याल ही पढ़ लिए। 3 ओवर के बाद स्कोर एमएसडी स्ट्राइकर्स का 16 पे 1 विकेट और इक्वेशन है 76 रन्स नीडेड 7 ओवर में। और एक और बार फिर से मैं ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लेयर्स को आप पुश कीजिएगा कि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। और अब क्रीज पर आए हैं यश बोरा, नए गेंदबाज। तो पहले 3 ओवर में दबदबा तो बनाकर रखा है, दबाव बनाकर रखा है बॉलिंग टीम ने। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड अथर्वा के बल्ले से, पर वहां पे दर्शन मौजूद, सिर्फ 1 रन मिलेगा उन्हें। और यहां पे यश बोरा ने अपनी टीम को दे दी है दूसरी सफलता। अजीत सिंह अपने टीम के मुख्य बल्लेबाज है और उन्हें पवेलियन की ओर लौटना होगा और वो जाते जाते अथर्वा को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। मैं मानता हूं उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा इस वक्त के रन चेस को पूरा नहीं कर पाए, अपनी टीम को जीत के तरफ लेकर नहीं जा पाए। तो स्कोर अब एमएसडी स्ट्राइकर्स का 17, 2 विकेट पे। और फिर से रिक्वेस्ट है सभी प्लेयर्स है, सभी फील्डर्स है कि जल्द से जल्द अपने फील्डिंग पोजीशंस पर आप चले जाइएगा, क्योंकि वक्त ज्यादा है नहीं हमारे पास और गेम बहुत अभी भी बाकी। नए बल्लेबाज जिनेश शिंगवी, और ये बॉल हवा में, नो मैन्स लैंड। सबसे बुरा लगता होगा एक बॉलर को कि जब वो चकमा दे देते हैं एक बैटर को, पर तब भी बॉल हवा में जाके गिरता है नो मैन्स लैंड पर। बॉलर भी कहेगा कि ये कैसी नाइंसाफी हुई कि अगर जाना था तो हाथ में जाते, पर पहुंच गई गेंद नो मैन्स लैंड में। और ये अच्छी स्लोअर डिलीवरी, अथर्व को पूरा पेस
निकालना पड़ा अपने आप से। तो यश बोरा की ये जो गेंदबाजी हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, और एक लेफ्ट आर्म बॉलर जब एक राइट हैंडर को डालता है तो वो जो एंगल है वो बहुत ऑकवर्ड ऑकवर्ड एंगल होता है राइट हैंडर के लिए, क्योंकि अक्रॉस द विकेट आता है, बिल्कुल बैटर के ना ब्लाइंड स्पॉट से बॉल निकल के आती है कभी कभी। 21 for 2 after 4 overs. Equation is now 71 runs needed of the last 6 overs. And I once again ask the teams to please speed up proceedings. Two wide deliveries. ओह, उस बॉल पे बाउंस देखिए, ऐसा लग रहा है कि कृणाल पांड्या ने डिलीवरी डाली है वो।
गुड लेंथ से इतना ज्यादा बाउंस, वो भी एक स्लोअर बॉलर के लिए, एक स्पिनर के लिए। शॉट लगाने की प्रयास तो कर रहे हैं बल्लेबाज, पर वो कनेक्शन मिल नहीं पा रहा है उन्हें, स्वीटली टाइम कर नहीं पा रहे हैं इस वक्त, और सभी बॉल्स फील्डर्स के हाथों में जा रहे हैं। और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड होता है एक बैटिंग पैर के लिए, एक बैटर के लिए, जब आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी अपनी जान लगा रहे हैं, पर तब भी बॉल जो है वो बाउंड्री के पास नहीं जा रहा है। और ये देखिए, मैं बाउंड्री की बात कर रहा था, बाउंड्री के सीधा बाहर भेज दिया है और क्राउड में कैच होते होते बच गया। तो स्कोर 5 ओवर के बाद 35 फॉर 2। इक्वेशन अभी है 57 रन्स नीडेड ऑफ 30 डिलीवरीज। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा ऑफिशियल से कि वो प्लेयर्स को भी पुश करे कि जल्द से जल्द शुरू करें हम गेम, और थोड़ा 35 फॉर 2 है स्कोर 5 ओवर के बाद। इक्वेशन 57 टू विन ऑफ 30 डिलीवरीज। और ये चीज पर काम करना होगा अगर आपको डिफेंड करना है टोटल। तो अब एक्स्ट्राज अफोर्ड नहीं कर सकते। सामने वाली टीम ने भी बहुत एक्स्ट्राज जरूर डाली थी, 7 एक्स्ट्राज डाली थी उन्होंने। यहां पे ऑलरेडी एसएन योद्धास ने 7 एक्स्ट्राज डाल लिए हैं और 5 ओवर अभी भी बाकी है इस पारी के। ओ, इस बार नहीं, तो लगता है कि इसी की कोशिश कर रहे थे वो पिछले गेंद पर भी, पर वो मार्जिन फॉर एरर ही इतना कम होता है ऐसे डिलीवरीज पर। अगर आपको वाइड डालना है, वाइड लाइन की तरफ डालना है, तो आपको एग्जीक्यूशन और आपको जो कंट्रोल है लेंथ पर 100%। और क्या ये विकेट? जी बिल्कुल, यहां पे विकेट मिला है, बिल्कुल विकेट मिला है। रन चेस में एक और झटका मिलते हुए एमएसडी स्ट्राइकर्स को अथर्व सूरते पवेलियन की ओर लौट रहे हैं। और यहां पे मैं फील्डिंग टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फील्डर्स हैं वो अपने पोजीशन छोड़ के ना आए, अगर जरूरी ना रहे तो,
क्योंकि वापस जाने में भी जो वक्त जाता है वो बहुत कीमती होता है। यही छोटी छोटी चीज़ों पर अगर हम ध्यान रखेंगे तो दिन के अंत में जो वक्त है वो हमारे साथ होगा, हमारा साथ देगा। तो बड़ा झटका मिला है नए बल्लेबाज अब। ओ, एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि टेस्ट मैच देख रहे हैं हम। बॉलर ने आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल को डाला और बैटर ने वेल लेफ्ट कर दिया। और महेश भाईगुड़े टीम ओनर खुद आए हैं क्रीज पर। ओनरशिप लेना पड़ेगा उन्हें और अपनी टीम को जीत दिलानी होगी अभी। हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी बंद है। सुनो शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बनलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री यूपीआय क्यूआर, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब. और वो उन्होंने अपना शॉट कल रात को ख़त्म किया और बॉल उनके पास आ जाए, इतनी जल्दी वो शॉट लगा दिया उन्होंने। और यहां पे फील्ड में बदलाव, लॉन्ग ऑन अंदर, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ अभी दोनों पीछे हैं। कवर्स को अंदर बुला लिया है। पर नतीजा बैटिंग टीम के लिए बेहतर, क्योंकि 6 रन आए हैं। बिल्कुल बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा शॉट ये। मैं देख सकता हूं कप्तान अपने टीममेट को कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप अपने प्लान्स पर बने रहिए, अपने प्लान्स पर स्टिक करिए, जिस चीज की हमें खोज है वो हमें मिल जाएगी।
लेग बाय 6 डॉट बॉल। और ये गेंद हवा में है, कहां जा रहा है फील्डर, नीचे, सीधा कैच, और ये मिल चुका है विकेट। सूरज मालपानी बहुत खुश उस विकेट से, एसएन योद्धास बहुत खुश उस विकेट से, और टीम ओनर महेश भाईगुड़े को वापस लौटना होगा अपनी टीम के पवेलियन की ओर। और मैं ये देखना चाहता हूं कि सागर का क्या रिएक्शन है सूरज के इस विकेट पर। तो 4 विकेट खो लिए हैं अपने एमएसडी स्ट्राइकर्स ने। 45 है उनका स्कोर और उन्हें जीत के लिए चाहिए 47। 47 रन्स इन 20 बॉल्स is the equation. किरण गरगोटे अगले बल्लेबाज, और ये देखिए बिल्कुल ब्लॉक होल में डाला वहां पे सूरज ने, कमाल। अब देखिए कि क्या कर देता है एक बॉलर के लिए एक विकेट। अलग कॉन्फिडेंस उभर कर आ रहा है अब। और ये सीधा फील्डर के हाथों में, गेंद इतनी अच्छी नहीं पर फील्डिंग उतनी अच्छी। और वहां पे देखिए सूरज मालपानी भी अपने गेंद पर बैकअप करते हुए, वो नहीं चाहेंगे कि अपने ओवर में वो रन्स कंसीड करे ज्यादा। और 7 ओवर के बाद स्कोर 46 फॉर 4 इक्वेशन। 46 रन्स नीडेड इन द लास्ट 18 बॉल्स, आखिरी के 3 ओवर। और ये बैटिंग पावर प्ले का ओवर है। इसीलिए केवल, और ये मेक और ब्रेक ओवर है इस मैच का। इस ओवर में अगर 15 से ज्यादा रन्स आते हैं, ओह, वहां पे कलेक्शन पूरा करते तो एक विकेट मिल सकता था। यहां पे एक मिस चांस, हाफ चांस, और ये क्लोज गेम्स में हाफ चांसेस मिस चांसेस भी लेने होते हैं। तो जयेश जी ने अपनी जो पहली ओवर थी बहुत अच्छी डाली थी, केवल 8 रन दिए थे उन्होंने। ओ बिल्कुल बिल्कुल फुल लैंड यॉर्कर लैंड डिलीवरी है, कमाल की डिलीवरी। मैं मानता हूं कि शायद जिनेश जी भी उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। प्रेशर प्रेशर, जब स्कोरबोर्ड पर इतना बड़ा
टारगेट हो आपको चेस करने के लिए, और बड़ा इसीलिए क्योंकि बॉल्स उतने नहीं। आखिरी के 2 गेंद बचे हैं इस बैटिंग पावर प्ले के। ओ, ये कमाल की डिलीवरी, यहां पे रन चुराने की कोशिश। यस नो में हेजिटेशन थोड़ी सी, पर विकेट नहीं खोया अपना। अभी भी एक गेंद बाकी है इस ओवर की। 44 रन्स रिक्वायर्ड इन 13 बॉल्स। Forty-four is now 43. So 49 for 4 at the end of 8 overs. Just 2 more overs to go. MSD Strikers require 43 runs to win. 43 runs to win. Who will it be that bowls the over, the penultimate over? They say that this over is the most important when you're defending a total, because it sets the tone for the last over. तो कप्तान दर्शन बहेती ने अपनी पेनल्टीमेट ओवर में पहली ही गेंद पर विकेट ले लिया है। उनका, अगर मैं फिगर्स की बात करूं, उनके फिगर्स इस वक्त हैं 1.1 ओवर्स, 2 रन्स एंड 2 विकेट्स। उनका इकोनॉमी इस वक्त 1.17 का है, 2 रन से भी कम। 5वीं विकेट खोते हुए अपनी यहां पे एमएसडी स्ट्राइकर्स 43 रन्स इन 11 डिलीवरीज। ओह, ऐसे लगा कि बहुत बहुत करीब था वो स्टंप्स के। यहां से मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टंप्स को लगा भी था, पर मेरी आंखें मेरे साथ मजाक करते हुए। तो 2 गेंदें हो चुकी है। अब इस गेंद के बाद सिंगल डिजिट्स में जाएगा हमारे बॉल्स का काउंट। जी बिल्कुल। और ये देखिए, बहुत कमाल का थ्रो डीप में, सीधा विकेट कीपर के हाथों में। यहां पे मौका था शायद बॉलिंग एंड पर पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड थे जयेश जी विकेट कीपर की ओर, निगाहें उनकी सिर्फ उनकी तरफ। 42 required of 9 deliveries, mathematically still possible. और वहां पे देखिए दर्शन खुद अपनी बॉलिंग पर फील्डिंग करते हुए, कमिटमेंट 100% उनका। और ये कमाल का ओवर डाल रहे हैं ये। इसे कहते हैं कैप्टन्स परफॉर्मेंस, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग बाय एग्जाम्पल।
just going for a big wild swing. Abhishek not seeing the ball, not watching the ball, but I don't blame him either. The situation is such, it's 40 needed of 7 balls. Still in the game. Mathematically still possible. Oh, and is that a wicket? Yes, that's a wicket, but the umpire is raised his arms there to signal a wide, but that wide will not matter to them. That wide will perhaps matter to the organizers because it means another extra delivery and an extra little bit of time. I would request the new batter to take the crease as quickly as possible. And would also ask the fielders to quickly take their positions as we are way above time. So 39 required of the last 6. $39 required. It's almost over. और जैसे आरसीबी के फाइनल में पिछले साल हेजलवुड को सिर्फ लीगल डिलीवरीज डालने की जरूरत थी, यहां पे भी कुछ ऐसा ही करने की जरूरत है सुमित को। 6 लीगल डिलीवरीज बस, यही सोच रहे होंगे सभी खिलाड़ी एसएन योद्धास के। वो देखिए वो पावरफुल थ्रो डीप में से, और कौन but दर्शन। Oh, that's in the air. सुमित बॉल के पीछे भाग रहे। ओ, पहुंच भी गए थे, पर ये जो कैचेस होते हैं पीछे भागते हुए, आसान नहीं होते, बिल्कुल आसान नहीं। पर इस मैच को मैं कहूंगा अपने कड़ी मेहनत से जीते हैं, आसानी से नहीं। पर क्या जीता है इस मैच को। जब पहली इनिंग्स खत्म की होगी तो डाउट जरूर किया होगा उन्होंने कि विल वी बी एबल टू चेस दिस टोटल, डिफेंड दिस टोटल रादर। बट व्हाट अ डिफेंस इट्स बिन, व्हाट अ परफॉर्मेंस इट्स बिन। Wonderful job by the SN Yodhas and living up to their name of Yodhas, fighting right till the end and defending what is a very small total. इसी के साथ हमारा सुपर किंग्स प्रीमियर लीग सीजन 6 का डे 1 यहाँ पे खत्म
होने वाला है, बट पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के बाद। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों टीम्स के दोनों प्लेयर्स से कि आप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए जल्दी से जल्दी आ जाएं ताकि हम आज के दिन को खत्म कर सके। विचार बदला आणि बँकही. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. दोनों टीम से कि आप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए आ जाइए. इफ यू हैव एनी मैसेजेस और एनी टॉक्स यू वांट टू डू, यू कैन हैव देम आफ्टर द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, बिकॉज आप दूसरी टीम को भी इंतजार करवा रहे हो. MSD strikers would call upon all the players to quickly join us for the post match presentation. MSD strikers, I would ask you to quickly join us for the post match presentation.
जेव्हापासून हे दुकान चालू केलंय मी तेव्हापासून बँकेचंच तर काम करतोय. घ्या बांधलो ना शिपाई. नॉट बँकिंग विथ एयू. एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ऍपने बँकेची सगळी कामे. हो पाटील साहेब, विचार बदला आणि बँकही. एयू सेव्हिंग्ज अकाउंट मध्ये मिळतात अमेझिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बँकिंग आणि हायर इंटरेस्ट, ते पण दर महिन्याला. मनी 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 एव्हरी मंथ. विचार बदल आणि बँकही. शुक्ला हाँ जी बंद है. सुनो शुक्ला जी. अरे कल आना, आज बैंक बंद है. बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से लगाया उन दोनों ने और टीम जीती है तो खुशी होनी चाहिए, या मुझे लग रहा है कि उन्हें बस लगता है कि जाने की जल्दी है. तो आई वुड लाइक टू कॉल ऑन बोथ द कैप्टन्स ऑफ द टीम्स. MSD स्ट्राइकर्स के कप्तान से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा. और सर आप बताइए कि आपकी टीम ने ये डिसीजन लिया कि हम पहले बैटिंग करेंगे. हमने पूरे आज के दिन में देखा कि सारी टीम्स ने बॉल फर्स्ट किया और ऑलमोस्ट सभी मैचेस वो जीते भी है. और वो निर्णय लेने के बाद ऐसा एक टाइम था फर्स्ट इनिंग्स में कि जहाँ पे थोड़ा सा आपने फॉल्टर किया था. जो आप सोच रहे थे एक बड़ा टारगेट, वो हो नहीं पाया. पर उसके बाद भी आपके जो परफॉर्मेंस से देखा हमने कि सभी प्लेयर्स इतने पॉजिटिव थे. तो आपने कैसे उनको पॉजिटिव रखा और थॉट प्रोसेस था जब आप ऐसे टोटल को डिफेंड कर रहे थे? सबसे पहले तो मैं दर्शन के बिहाफ पे इधर कर रहा हूँ बिकॉज ही इज़ हैविंग सम इश्यूज इन हिज थ्रोट. सी बेसिकली चेस बैटिंग फर्स्ट करने का ये दिमाग में था क्योंकि वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग साइड. सो वी आर कॉन्फिडेंट इन restricting them to the score which we can put on the board. However, we were at least 20 runs short, so we had a discussion also that batting unit needs to fire up now. But having said that, to chase 92 was actually a very small target. और जिस तरह से हमारे सभी बॉलर्स ने वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया है, so hats off to all the guys, especially the captain himself, then Jayesh by myself and all the other bowlers, everybody. Malpa, after getting hit for a big 6 on the very first ball, फिर भी उन्होंने 7 रन देके एक बड़ा विकेट लिया हमारे टीम के लिए. So I think what we did in second half of the match was what we expect to do as a team. As a batting unit, we are still to do certain amendments. Hopefully in the next match, we will be firing up on that aspect as well. Really well said. Congratulations to the Yodhas for this victory. And sir, Ajit, I would now like to call you and get your thoughts. When the first innings got over, maybe you were happy that the team that elected to bat first is not reached a target that they would have wanted. So I'm sure you were feeling confident. But where did you feel like you lost the game? Well, शुरू में हमने बॉलिंग काफ़ी अच्छी की, अच्छी क्वालिटी साइड को 90 रन पे रिस्ट्रिक्ट किया. हमारा इशू आया बैटिंग में जहाँ पे हमारे बैट्समैन क्लिक नहीं कर पाए. बट हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट मैच में अच्छा परफॉर्म कर. जी बिल्कुल, यही उम्मीद करेंगे MSD स्ट्राइकर्स के सभी खिलाड़ी. वंस अगेन ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द MSD स्ट्राइकर्स. और अब प्लेयर ऑफ द मैच की बारी. आई नो ही कैन नॉट स्पीक अ लॉट इफ हिज थ्रोट इज हर्टिंग, बट प्लीज ऑन द स्टेज दर्शन फॉर द प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस. 14 runs, but more importantly 2 overs and 3 wickets in those 2 overs. Congratulations Darshan, congratulations Yodhas. And the fighter of the match is Atharva Surte. So Atharva, please join us on stage for your fighter of the match award. He bowled an excellent over, and Rajesh sir had spoken about how after conceding a 6 on the first ball, they came back. That's what Atharva also did in his bowling innings. Unfortunately for him and his team, they end up on the losing side. Congratulations to Atharva, and with that, folks, we reach the end of day 1 for the Super Kings Premier League 2026. We will see you all tomorrow at sharp 7:30.